mirror as well. So these are the updates that we're getting to know, and today as well there will be another Kalash Yatra that will be carried out as a part of the rituals, of the Pran Prashishtha that is being carried out by Arun Mishra on behalf of the Prime Minister as well. So all of these updates are coming to light from Ayodhya, as Ayodhya in fact is gearing up for the 22nd of January, and what you see around me is also another glimpse of how essentially Ayodhya is getting decked up, and how each and every nook and cranny in fact has this particular life-size model of the Ram Temple that has also been placed, a life-size model of the entire newly constructed temple. This is the main part of the temple that has been kept here. In fact, apart from that, there is a Parkota wall around the temple, and there are 7 other temples as well that have been placed in and around that area. So these life-size models in fact essentially reflecting and depicting the entire struggle of 500 years, and how the people of Ayodhya, in fact you can see that people gather to take pictures of themselves with this temple, because this is another reflection for the kind of struggle that they have seen for this temple to be constructed, for this temple to stand tall on 22nd of January. And of course there are saints and seers who are carrying out their rituals and yagnas, and you can hear some of the recitations here as well in this particular vantage point near the tent city where we are reporting from. And this essentially shows us how the entire city essentially is also gearing up for the entire 22nd of January on the consecration ceremony, and we'll try to go towards them, and we'll try to get in a word from them as well, because a lot of happy faces, a lot of them in fact who have gathered here and have come from across the country as well. आप लोग बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मंदिर के इसके साथ फोटो वगैरह ले रहे हैं, पूरा जश्न का माहौल लग रहा है। हम गुजरात से आए हैं, यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं, साधु संत के सेवा देने आए हैं। क्या सेवा देंगे आप यहाँ पे? हाँ, क्या सेवा देंगे यहाँ पे? साधु संतों के लिए जमाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ऐसे आए हैं। 22 जनवरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल लग रहा है। 22 जनवरी का उत्सुक है लोग 22 के लिए। हाँ, वो अच्छा होगा ना, सारा हो ही जाएगा। अभी 22 जनवरी का साधु संतों सबको इधर आने का है, अच्छे तरीके रहेगा। हम साधु संतों को हम इधर भोजन खिलाने के लिए आया है गुजरात से। काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पे लंगर वगैरह भी लगाने के लिए, अपनी पूरे श्रमदान देने के लिए। श्रमदान देने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए आए हुए हैं। हम कच्छ गुजरात से आए हैं, इस साधु संतों के सेवा में आए हैं। हमारा आचार्य पीठ इधर आएगा, जगत गुरु पीठ यहाँ पे आएगा, उसका सब आदेश के हम 100 लोग आए कच्छ गुजरात से पूरे सेवा करने के लिए। तो हमारा महामंत्री भी है साथ में, वो भी आया है प्रमुख। पूरी तैयारी हो चुकी है 22 के लिए। कितने लोगों के लिए आप सेवा कर रहे हैं, कितने साधु संतों का ध्यान रख रहे हैं आप? वो हमारे को वो मिलेगा उधर से, स्वयं सेवक का कितना आदमी को तैयारी हो गई है? हाँ, हो गई है, उधर सब हो गई है। So you can see how people have come from across the country. This particular group has come from Gujarat, and of course there are a lot of other people who have come from various other states who have come to volunteer their services, volunteer their time, and every part of the city in fact has a langar that has also been given out, where people are giving their services and volunteering for food, so that anyone who is in Ayodhya does not go empty stomach, because as of now people in Ayodhya believe that this is a very blessed time to be in the city, and that they have to take care of each other, the famous Ganga Jamni Tehzeeb as well as they call it here, and apart from that of course all of them saying that this is a second Diwali for them. So that essentially is the mood here in Ayodhya as people gear up for the 22nd of January. And then of course we are also keeping our viewers ahead, Suesha, on the rituals that are being carried out for the 22nd of January as well. Absolutely, Priyanka, and one can totally sense the enthusiasm sitting right here. In fact, it is not just Ayodhya, but in the entire country where,
the word is that it is going to be a Diwali-like celebration. Also to understand from you, Priyanka, that by the 21st, most of the guests and all those who've been invited will start to make their way to Ayodhya. As we understand that, more than 1,500 car sevaks, seers, and prominent personalities from across the country, including political figures who will be seen in Ayodhya. In the meanwhile, in the next 4 days, like you're telling us that today it is likely that the idol will be placed in the Sanctum Sanctorum. If you could give us details of what is to happen tomorrow, day after, and then on the 20th. Well, absolutely, Suesha. There are, as we speak, and as that gentleman was also pointing out, there are saints and seers who are coming from Kashi as well, who have, started coming into Ayodhya. Even yesterday, we had seen those pictures of the Kalash Yatra that was being carried out by the saints of Kashi, and this was another ritual that was being carried out by, Arun Mishra himself. Apart from that, of course, we had seen yesterday how the idol rituals were being carried out with the idol, and as you pointed out, even yesterday night, the idol was placed inside of the temple premises, and today as well will be placed inside of the Sanctum Sanctorum. Post that, we will also have a lot of other rituals which will essentially see, that will happen essentially inside of the Sanctum Sanctorum itself, around the idol, because that is where the main puja and the Pran Prashishtha will actually take place. But of course, on 22nd of January is when we will see the largest gathering of saints and seers who will carry out the mantra ucharan, the shlokas that will be chanted. All of that recitation will take place. The yagna will take place as well. So that essentially is the rituals that we are now looking at inside of the temple premises, inside of the Sanctum Sanctorum as well, that will be carried out. And then of course on 22nd of January, after it is completed at around 1 p.m. or so, that is the approximate time, is when the blindfold, as I was mentioning earlier, of the idol will be removed. The idol will be shown a mirror, and in that ritual there will only be 5 people who will be present. That will include the Prime Minister Narendra Modi, the RSS Chief Mohan Bhagwat, the UP Governor Anandiben Patel, the UP Chief Minister Yogi Adityanath, and the main priest of the Ram Temple, Nritya Gopal Das. So these 5 people are going to be inside when that particular ritual happens. That will essentially culminate the entire Pran Prashishtha ceremony, the entire consecration ceremony on 22nd of January. Post that, the entire temple will then be open for the devotees to come in and then do their darshan as well. So that essentially is what we are looking at as far as ritual goes for the Pran Prashishtha, for the consecration ceremony. All of these things now will be carried out inside of the temple premises, only with the main saints and seers who will be present inside. And that is what I was also trying to, stress upon, because even though the rituals and the yagna is happening only in one particular part of the Sanctum Sanctorum inside of the temple premises, which, obviously because of security reason, nobody is allowed to go inside. That has been the case with the Ram Janmabhoomi temple for several years. But the entire city of Ayodhya is celebrating that yagna. Right. The entire city of Ayodhya, in fact, is celebrating the Pran Prashishtha as well. Oh yes, and the mantras that can be heard loud and clear all across Ayodhya, I'm sure, Priyanka, as we also hear it right here in our studios. Rakshita, I want to come to you because you and Priyanka, who has been there for a longer time, have been getting us ground reports on how the preparation is underway. Now, we understand that more than 4,000 people will be present on the big day, and in terms of arranging enough food, ensuring that, whether it is items related to Lord Ram, or sweets, or stay, or accommodation, or how even the commute is going to happen, should be able to accommodate that capacity. And in that sense, preparation is happening in full force. Is everything on track, considering how there is going to be a massive welcome that we may start witnessing from the 21st? Is that question to me, Suesha? I did not hear the question, but I am live from the Ram Ki Peri right now, and there is a special puja that just took place. It's a local tradition that is called the Guduriya Puja, and I think we have some people who've also taken part in that. Ma'am, आप कहाँ से हैं? मैं तो इलाहाबाद से हूँ,
लेकिन आई हूँ बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से आई हूँ दर्शन के लिए, राम लला का दर्शन करने के लिए आई हूँ। हाँ, बहुत शौक था इनका, भगवान जी पूरा किए, इसीलिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। 500 साल का इंतज़ार है। 100 साल का इंतजार है। हाँ, राम लला जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अयोध्या तो एकदम जगमगा गई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। कितने दिनों से आप आ रही हैं? मैं पहली बार आई हूँ मैम। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे आज 3 दिन हो गया यहाँ पे रहते। हाँ, 3 दिन से। दर्शन करके जाएंगे? मैं दर्शन करके ही जाऊँगी। हाँ, इतनी बड़ी शौक है मेरी कि बहुत दूर से आई हूँ, दर्शन करके ही जाऊँगी। हाँ जी, अब यहाँ पर राममय हो गया है पूरा माहौल। राममय हो गया है, सब कृपा हमारे योगी और मोदी जी की कृपा है, जो सनातन धर्म जाग गया और जगा दिए उन्होंने। बाकी तो मर चुका था सनातन धर्म, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है और पूरा सनातन जाग गया है। बच्चे से बूढ़े तक जो है श्री राम के जो है नारे लगा, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और अयोध्या तो पूरा स्वर्ग बसा दिए हैं। अयोध्या में आने के बाद लगता है इसके सामने बॉम्बे कलकत्ता सब फेल है। हाँ, तो एक नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और 30 साल भी अब और भी बड़ा होगा। हाँ, ऐसा पहले मैं 2-3 वर्ष पहले आया था तो यहाँ काम चल रही थी। मैं बिहार से लखीसराय से, मेरा नाम रंजीत कुमार है, पिपड़िया गांव से आता हूँ और मुझे यहाँ आकर के 3 वर्षों के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, जो कि चमत्कारी परिवर्तन है। हाँ, और ये सब देख कर के हमारा जो है रोम रोम पुलकित हो गया है और हम ये फूले नहीं समा रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो आए हैं जिस काम के लिए, यहाँ जो है 25,000 हवन कुंड बना है, तो उस हवन कुंड में जो हम लोग चाह रहे हैं कि हवन करने के लिए जो है हम लोग को कैसे क्या करना पड़ेगा, किस रास्ते से गुजरना होगा, हम लोग को पंजीयन कराना होगा या डायरेक्ट हम लोग हवन करने के लिए डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। आम पब्लिक जो भी हैं, चाहे बिहार के, चाहे भारत के, चाहे पूरे हो, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कौन सा चैनल है? रिपब्लिक। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हवन करने के लिए हम लोग को भी इजाज़त मिले और हर भारत के ही नहीं, हर विश्व के जो सनातन मानने वाले हैं और जो हमारा जो हिंदू है और हमारा भारत जो है, जो कि कभी सोने के चिड़िया कहा जाता है। भारत इस वक्त जो है एक लग रहा है। हाँ, एक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है आज हम देख रहे हैं लोग यहाँ पूरा राममय हो गया है, कन्याकुमारी तक। समझे, यही निकल रहा है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल आज बहुत अच्छा लगा। राम सिया राम जय जय राम। आज जन्म बन गया हम लोग। श्री राम जय राम। हम राजस्थान से आए हैं। 1990 की कार सेवा, 1992 की कार सेवा में हम थे। तब से अयोध्या की हर आंदोलन, आज जो दृश्य दिख रहा है हमारा, जो 1990 में आने वाली कार सेवा, 92 में किया हुआ काम आज अब हमारे सामने फलीभूत हो रहा है। और आज अब क्या अलग क्या है उस टाइम का माहौल जो और आपका माहौल? समय का माहौल तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जहाँ डंडे पड़ते थे, जहाँ लाठियाँ चलती थी, जहाँ गोलियाँ चलती थी, आज फूलों की बरसात हो रही है। जगह जगह पूरी अयोध्या राममय हो गई है। सबके मुंह से राम निकल रहा है और सबके चेहरे पे राम टपक रहा है। और अब राम राज को अब स्वीकृति मिली, आपको समझ? राम राज तो शुरू से था ही। भारत की स्थापना ही राम राज्य से हुई थी, और लेकिन बीच के कालखंड में लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज हमारे सामने दिख रहा है तो हम सब हम मान रहे हैं। आज पूरा संसार मान रहा है भारत राम में है, राम राज्य की ओर है, और आगे भी सारा और जो विवादित चीजें हैं वो भी दूर होंगी। सब जगह राम का वातावरण होगा। राम और कृष्ण की भूमि है, तो राम और कृष्ण। राजनीति हुई है इस पर, अभी भी हो चल रही है और 22 तारीख तक चलती रहेगी। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति है, लेकिन ये करने वाले करते रहेंगे। जब पहले अयोध्या का आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब से राजनीति इनकी थी। उनको जैसा चश्मा होगा, तो प्रभु ने कहा है, जैसे ताकि रही भावना तैसी, ते हरी मूरत देखी जैसी। जिसको राजनीति का शौक है वो ये आंदोलन राजनीति में दिख रहा है, जिनको राम का शौक है उनको राम में दिख रहा है, और जिनको यानी कि लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है उनको अंधेरा दिख रहा है।
कितना उत्साहित हैं आप जो 22 तारीख के लिए जब आप देखें? मैं राजस्थान से आया हूँ, अभी मेरे को राजस्थान से कुछ लोग मिले, पैदल चल के आ रहे, पैदल चल करके आज वो 22-25 दिनों में पहुँचे हैं। कैसी मन में उत्संग, और युवा आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इस देश में जो परिवर्तन दिख रहा है, इस देश में जो परिवर्तन दिख रहा है, वो परिवर्तन देश की युवा पीढ़ी में दिख रहा है। और युवा में परिवर्तन दिखता है वो बड़ा व्यापक और लंबे समय तक का रहने वाला है। हम लोगों की पीढ़ी तो जाएगी, लेकिन युवा में अंकुरित बीज, युवाओं में देशभक्ति का जीव, युवाओं में धर्म का बीज, ये ऐसा पनपेगा, पूरा हिंदुस्तान धर्म का देश कहलाएगा। तो जय सिया राम के जो नारे हैं वो हर जगह हमें सुनाई दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स वी कैन सी व्यूअर्स एज वी वर जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कार सेवा that happened just decades ago. He was telling us how the difference is, what we see right now, the atmosphere and the excitement, of course, and also especially talking about the upcoming the generation, the youth of India. India is, of course, mostly a young country. The population of the youth is exceeding that of the old age or the middle age group, and it's of course very heartening to see how everybody is right now excited and enthusiastic for Ram Temple. I'll try to pan the camera. I'll request my VJ Ranbir to show you this special puja that is happening right now on the ghats of Saryu. You can see hundreds of women have been have gathered up here for this special Guduriya puja. It's a tradition here. This is hosted by someone whose wish comes true, and after that he treats and conducts this puja for ladies who are from Ayodhya itself. And you can see these special rituals are taking place right now on the banks of Saryu River. So it's of course a very beautiful morning. There is this nip in the air. It's a wintry morning, but there are hundreds of people who are of course gathering up at these important sites, be it Hanuman Gadi, the Ram Janmabhoomi temple, of course the temples around, and also Ram Ki Padi, which has its own significance. This is the river, the Saryu River, where it is believed Ram himself, Lord Ram, had taken the holy dip when when Lakshman had asked him that I want to visit all the pilgrimage of the world, and that's when Lord Ram, according to traditions and mythology, he had said that if you take a dip in the Saryu River, you will be visiting and you'll be getting all the punya of all the pilgrimages. So right now we are of course reporting live from Ayodhya, sipping to a short break right now. On the other side, of course, our coverage from Ayodhya with our network of reporters continues on the other side. Stay tuned. अच्छा राममय हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है, और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता, लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण जय श्री राम, नारायण नारायण जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अनजानी चा सूता
तुला रामाचे वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya. And right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the dhoop batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the the dozens of flowers along with the dhoop batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं. क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए? क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहे हैं. हम लोग अयोध्या में दीनदयाल धाम से हैं. मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र यादव है. मैं वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. हम लोग दीनदयाल धाम से केशव धूप लेके आए हैं. ये जो केशव धूप है हम काव डंग से, काव यूरिन और गौ घृत से मिलके इसको बनाते हैं. और ये जो केशव धूप है, इस केशव धूप का जो बेसिक पर्पज है हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं नॉन मिल्किंग काव में, उसके लिए हम लोग इस पे हम काम कर रहे हैं इस पे. और The idol of Ram Lalla was brought inside the Sanctum Sanctorum of the Ram Temple last night. Shri Ram Mandir Construction Committee Chairperson Nipendra Mishra said that the idol is likely to be installed today. In preparation for hosting thousands of devotees, including foreign invitees and guests from across the globe, Ayodhya has intensified security measures across the state. Commandos of UP ATS have been deployed at Lata Mangeshkar Chowk ahead of Pran Prashishtha ceremony. Well, viewers, we are keeping you ahead on all that's happening in Ayodhya. The consecration ceremony is going to take place on 22nd, and the entire city is gearing up in a mood for celebration for the 22nd. Keep watching Republic for everything that's happening in Ayodhya. We'll be back after a very short break. Well, ahead of the Pran Pratishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya. And right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also
a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV. अच्छा राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार Hello, a very warm welcome, viewers. We are live and breaking from Ayodhya. All the action in the run-up to the grand inauguration of the Ram Mandir is going to happen, and we are, of course, getting you all the latest updates via our network of reporters, Public TV, getting you the biggest coverage from Ayodhya and, of course, across the country as the excitement is only building up. We'll get you more, but first, the headlines. Lord Ram's idol has been placed in the Ayodhya Temple even as grand consecration process underway. UP CM to hold cabinet meeting today, days ahead of the grand consecration. Delhi Chief Minister summoned by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says Aam Aadmi Party to contest all 13 seats in Punjab. Congress's Ravneet Bittu meanwhile says no India alliance in Punjab. First test of the Aam Aadmi Party Congress alliance as both the parties field joint candidates for the mayoral polls in Chandigarh. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, arrested by the Enforcement Directorate in the BMC Khichdi COVID scam case. All right, we start with breaking news coming in from across the border. Now, in a tit-for-tat escalation, now Iran initiated a missile strike on Pakistan, prompting a retaliatory strike by Pakistan in Iranian territory near the city of Saravan. Now, Iran has reported 7 casualties,
resulting from this Pakistani airstrike. Also, subsequently, Pakistan has launched the Margbar Sarmachar operation in Iran. And my colleague Kaswa Klasra is joining us on the broadcast for more information on this. Of course, we are seeing the escalation is only getting intense, Kaswar. This is a tit-for-tat move by Pakistan, and there is an operation, Margbar Sarmachar operation, if I am pronouncing that correctly. Tell us more about this operation that Pakistan is conducting in Iran, Kaswar. We'll try and get reaction. We'll get you more from Kaspa. The audio line has been disconnected. We'll get you more, try and reconnect. But viewers, we are seeing what's happening between Iran and Pakistan right after Pakistan was attacked by Iran, and we see Pakistan now launching airstrike. My colleague Kaswar, I'm told, is back with us. Kaswar, tell us more about this operation that Pakistan has launched in Iran. All right, I'm told Kaswar is back with us. Kaswar, tell us more about this retaliatory strike by Pakistan. What is this operation? We are getting to know that Iran has also reported casualties. All right, we'll get you more updates from Islamabad, but right now that is the information we're getting on Pakistan military conducting retaliatory strikes against Iran, and we'll get you more details. But right now, shifting focus to some more breaking news. Now, Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, viewers, is all set to once again disregard the fourth summon in the liquor gate. This is the big update we're getting in right now, and if we delve deeper into this story, it reveals a recurrent pattern of non-compliance which we are seeing, be it Arvind Kejriwal, and we've seen in the past Hemant Soren as well. But of course, he's now ready to speak. He has called the ED officials to, of course, question him. But right now, Arvind Kejriwal, what we are learning, what we are picking up is that he will be skipping this summon once again, and this is a pattern of sorts that we are now observing. This is with regards to the money laundering case in the Delhi liquor policy case, which has gripped the Aam Aadmi Party. Top leaders of the Aam Aadmi Party, top ministers of Delhi, remember, are in custody in connection with this case. And Arvind Kejriwal, after skipping 3 summons by the Enforcement Directorate, we're getting to know will be skipping this summon once again. That is the big update we're getting in right now. The political face-off, of course, continues. Political face-off, of course, continues as far as this reaction, as far as this development is concerned. Because Arvind Kejriwal, remember, there are some, the key accused have taken name of Arvind Kejriwal. They have said that Arvind Kejriwal, at least they have claimed before the agencies, that Arvind Kejriwal was in the know of things, what was happening. And of course, this is a big update we have right now. Let's take a listen in to what BJP Shahzad Poonawalla had to say on this. Today is the full political conversion of Arvind Kejriwal and company. Those who under the leadership of Anna Hazare once said, first resignation, then investigation. Today they are under tutelage of Lalu Prasad, and therefore no resignation, no investigation. Not cooperating with the investigation after 4 summons. Imagine the first summon was skipped by Mr. Kejriwal saying that I am busy in campaigning. They lost deposit on all 204 seats. Then he said, I'm busy in Vipassana. Then he said that this is vendetta politics. And now, again, he's likely to skip this summon. If there is nothing to hide, if you're not the mastermind of this Sharab Ghotala, why are you so afraid? Chor ki mooch mein tinka hai.
And what is this vendetta victimhood card? My colleague Piyush Ori is joining us live on the broadcast for more on this story. Viewers, Piyush, of course, once again we are saying that Arvind Kejriwal is going to skip the ED summon. He again is not ready to face the Enforcement Directorate. He is not ready, very clearly, to face the questions of the Enforcement Directorate, and this has become a pattern as far as Arvind Kejriwal is concerned. So, Rakshita, it seems very likely that Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, may again skip the summon that has been issued to him. In fact, we are just reporting outside the Chief Minister's residence, and from here you can see that perhaps there is now speculation, there is movement that perhaps Arvind Kejriwal can come anytime from his official residence. And from here, he will go to Tyagaraja Stadium for an official function, following which he will depart to Goa. And as that what we have been told to us. But yes, it seems very likely that he will miss the Enforcement Directorate summon, and it will be now very interesting to see from here on when will the next summon be issued to Arvind Kejriwal by the Enforcement Directorate, by the central agency. Yes, there are some very tough questions. There are some very pertinent questions that needs to be answered by the Delhi Chief Minister, who is indeed facing the heat of this entire Delhi Liquorgate probe, in which two of his prominent ministers, namely Manish Sisodia and Sanjay Singh, have been arrested. They have been denied the bail. So yes, his role also is now proving to be very significant in trying to solve this Delhi Liquorgate case completely, for which the Enforcement Directorate is trying their best to ask Arvind Kejriwal to present himself before them so that they can ask some very important questions to him. But yes, time and again we are seeing that he is skipping the summon because he, according to the Aam Aadmi Party as well as Arvind Kejriwal, this is all illegal, this is all vendetta politics being played by the central agency at behest of a party. So yes, as Arvind Kejriwal is all likely to miss another summon, you are seeing a political war of words, whereas BJP is trying to attack Aam Aadmi Party, saying that they are not abiding by the law because they are in a way corrupt. That's why Arvind Kejriwal is trying to skip the summon. The Aam Aadmi Party on its side is saying that they have got nothing to hide, and they will definitely allow Arvind Kejriwal also to come and answer the questions by Enforcement Directorate if the proper law and procedures are going to be followed by the Enforcement Directorate. So yes, we are seeing the political war of words, but the situation from the ground over here is that it is very likely now that Arvind Kejriwal is going to miss his fourth summon also that has been issued to him by the Enforcement Directorate. Back to you in the studio. Right, Piyush. You know, Kejriwal's name has been mentioned in the charge sheet by, if we go by the accounts of the accused who have admitted that they were in touch with the Delhi Chief Minister. And you know, we know what we understand is that there were meetings also. You know, we know about the various reports on that FaceTime meeting. You know, he was very much in knowledge of what was happening. And he happens to be the supremo of Aam Aadmi Party, and the top leaders, ministers, are in custody. Now, what is Arvind Kejriwal waiting for, Piyush? What do we expect next from here on? We do understand any chief minister, even if he's in office, he is not immune from arrest. But what do we understand from here on? What is next for the Enforcement Directorate? So, Rakshita, you have raised three very important points. Yes, according to the charge sheet that has been mentioned by Enforcement Directorate, there does come the name of Arvind Kejriwal, where he is coming. In fact, while I speak, I would just request my video journalist to just show the visuals over here, because there seems to be a movement, and it seems very likely that Arvind Kejriwal might come out any moment from his official residence. But yes, as you mentioned, you raised a very important point that yes, the name of Arvind Kejriwal has figured out as far as the multiple charge sheets that have been presented not only by the Enforcement Directorate but the Central Bureau of Investigation also in this Delhi Liquorgate probe. You also mentioned that yes, Sameer Mahindra, one of the accused in this case, had mentioned that how Vijay Nair, the marketing manager of Aam Aadmi Party, got in touch with him, and
Arvind Kejriwal, through FaceTime meeting with Sameer Mahindru, had said that he must coordinate with Vijay Naya, who he said was his boy. So yes, all these allegations are being leveled against Arvind Kejriwal. It has also been said that all the important meetings that were being held, Arvind Kejriwal was in know-how of all these meetings, all these negotiations that was taking place between the top ministers, bureaucrats and the liquor manufacturers and distributors in the hotel and in several other places. So all these dots now need to be connected. All important questions requiring the framing of the liquor gate policy need to be asked from Arvind Kejriwal, because he not only is the Delhi Chief Minister, but he's also the Aam Aadmi Party Supremo, who has been named very categorically by the Enforcement Directorate in saying that most of the ministers knew about this alleged liquor gate scam. So all these questions now need to be answered by Arvind Kejriwal. But the key question is, the billion-dollar question is that even as there have been very serious allegations that have been leveled against Arvind Kejriwal, not only by the BJP ministers, but also in a way in some of the contents of the charge sheet, the million-dollar question is that will Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, abide by the summons that have been issued to him, and will he come and answer the key questions that is not going to be asked from him as far as the solving of this alleged liquor gate scam is concerned. Back to the studio. Right. Well, yeah, I have to stop you there. Thank you so much, Piyush, for the moment, for joining us with those details. We'll keep coming back to you for more confirmation on what's happening, if is Kejriwal going to react on this or not. But more news coming in with regards to the Aam Aadmi Party. Now, this news coming in from Chandigarh viewers. Chandigarh mayor polls are witnessing high-intensity drama as Aam Aadmi Party Congress councillors are staging a protest outside the MC office, attempting to enter, but they were stopped by the police. Now, Aam Aadmi Party and Congress accuse the BJP of using the police to obstruct their entry into the MC office, leading to heightened tensions and the deployment of heavy police presence to uphold law and order. So, my colleague Amardeep is joining us live on the broadcast from Chandigarh. Of course, what we're understanding, Amandeep, we're getting to know that there's high-intensity drama that's unfolding ahead of the crucial polls, the mayor polls in Chandigarh. Tell us more about this, please. Absolutely, Rakshita. The high voltage drama has been witnessed outside the MC office, and if my camera person can show you that heavy police deployment, and in fact the councillors, Congress and AAP councillors were stopped at the barricades, and after that they have sent back. They are claiming and blaming the BJP for postponing the election. So far there is no official notification. So you can see the visuals. Earlier 6 to 7 councillors, including Congress and Aam Aadmi Party, both were here. They tried to forcibly enter into office of MC. We are joined with us former Union Minister Pawan Kumar Bansal also. He's also here. Sir, now what is the situation? What all is happening? Please throw some light on that. Process of this elections. Firstly, the secretary who received the nomination papers and thereafter received the withdrawal paper from our candidate fell ill. And after him, today, the presiding officer who was to conduct the elections has suddenly been hospitalized. He's been hospitalized. We don't know what serious ailment he has immediately contracted. He's been hospitalized. And then in such a situation, instead of appointing another person immediately, they have chosen to postpone or cancel the election. This shows the totally anti-democratic attitude of this government, and if somebody were to summon it, it is not that the secretary has fallen ill. It is not that the presiding officer has fallen ill. It is the Bharatiya Janata Party which has fallen ill. The Operation Lotus has actually been withered away. And sir, what the Congress is going to do? Congress and Aam Aadmi Party going to the court. I mean, that's the only alternative left at this moment. There is no other course whatever. And even have they communicated officially to the councillors that the election has been postponed? I don't know. I'm not in touch with anyone. I only saw some of our councillors being pushed on the other side. I mean, not by the police, but by the people here. And I'm staying at the gate for the last 20 minutes. I'm trying to find out whether I'm permitted to go in, not, or because I have a pass for 11 a.m. I'm trying to ascertain,
and I'm asking them to write for me, write on this slip that the meeting stands postponed or cancelled or whatever, then I'd like to go back. I know that would happen, but they are not prepared to write. The police people have asked for the PRO to come, and the PRO, I would refuse to talk to him otherwise, but today I am prepared to have it written even from him, and I am prepared to do it. No, there's no communication on phone or otherwise to me, and well, I'm waiting for it. Thank you, sir. So, in fact, Rakshika, you can listen the former Union Minister of Congress Party, Pawan Kumar Bansal. The high drama is almost here. They have completely cordoned the MC office gate just because Congress is claiming that presiding officer is not well, and this has been informed to the councillors as well, and this election is likely to be postponed. So, Congress and Aam Aadmi Party is blaming BJP for the Operation Lotus, and in fact, on the other side, there is no such movement. But the police heavily deployed with the paramilitary forces to protect the MC office. So far, there is no official communication that either the elections has been postponed or it will remain on the scheduled time. So 11 a.m. has been crossed. Earlier, it is almost 11:15, and earlier the 11 a.m. was the timing that has been given by the MC officials for all the councillors and the voters for the mayoral election. But now the time has been passed, no official communications. But high drama, AAP and Congress is blaming BJP for Operation Lotus for poaching the councillors so they can make the negotiations. On the other side, all the councillors are camping with their own parties at the different places and in fact blaming each other. So see, this is the situation, Rakshita, presently. On one side, the Indie alliance is on the stake just because this is the first election they are going to contest together with the seat sharing. On the other side, BJP is trying to break this Here, Rakshita, the BJP councillors has also arrived here. You can see the visuals if my camera person can focus. Some of the BJP councillors has also arrived at the site, and they are coming from the other side of the road. See the visuals, they are quite visible in the visuals as well. Earlier, the Congress and Aam Aadmi Party councillors, and now the BJP councillors are reaching to the MC office, and let's wait and watch what they are going to do. And even there is a Punjab police security. Some people are arriving here at the office. High drama continuously. Back to Raghav Chadha. Rakshita, Raghav Chadha is here. Raghav Chadha is here with the Punjab police security. Aam Aadmi Party Rajya Sabha member has arrived here, and in fact, after the councillors protest is now Aam Aadmi Party Rajya Sabha member Raghav Chadha, who was coordinating the talks between Aam Aadmi Party and Congress for the Chandigarh mayors. And you can see the visuals now. Raghav Chadha has arrived here. Earlier, Pawan Kumar Bansal was here, and even the councillors of Aam Aadmi Party and Congress were here. But now the Raghav Chadha just arrived here to speak to the media what all is going to happen. I request my camera person to kindly follow. He is just going inside. With the full security. All drama is happening, Rakshita. All drama is happening here in Chandigarh over the mayor elections. The Indie alliance is on the stake this time. On one side, they are trying to prove their mettle with the seat sharing of mayor, senior deputy mayor as well as deputy mayor. But on the other side, the BJP is trying to break this coalition with their own strategy and the management. Senior leaders from Delhi has also arrived here. And you can see Raghav Chadha was coordinating between Congress as well as AAP, and he is the one who has actually negotiated all the party talks in both the parties and settled down the seat sharing for the mayor post. And in fact, he has arrived here. Now the things are escalating here at the situation. The situation is escalating. Security has been completely beefed up to maintain the law and order situation. And we will try to listen what the Raghav Chadha has to say. What the Raghav Chadha has to say now.
देखिए अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसे। All right, that was Raghav Chadda now upping the ante against the BJP. It's a litmus test for Congress Aam Aadmi Party. But we'll get you the moments that were captured by my colleague Amardeep, who was there in Chandigarh when that ruckus broke out and the protest broke out. Let's take a look at that. Look at this report filed by my colleague Amardeep. Well, you can see that now the Congress councillors are here, and in fact they are walking towards in a form of protest. High drama witnessed. आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपको रोक रहे हैं क्या? पुलिस वाले रोक रहे हैं हमें। क्यों रोक रहे हैं? क्यों काउंसलर्स तो अलाउड है? नहीं दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे। So here you can see that high drama has been witnessed outside the MC office again. Congress and Aam Aadmi Party councillors have came here together and they are trying to enter, but the police is stopping them. अब पुलिस खुद लगी हुई है। कोई बात नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी बन सकता है। अंदर कोई भी बन सकता है। Now the police is trying to maintain the law and order situation, and in fact the police is trying to block, and the presiding officer has not reached here so far. One by one, the police is trying to control the situation with the heavy deployment of the barricades. ताकि हम जो इंडिया गठबंधन हुआ है इनको मात ना दे सके, इनको हरा ना सके, इसलिए अपनी तानाशाही धक्केशाही पे उतर आए हैं। जी देख सकते हैं आपकी तमाम जो So Congress and AAP councillors wanted to enter. Time for a short break, viewers. On the other side, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says Aam Aadmi Party is set to contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. All that and much more on the other side. Stay tuned.
तरफ। अच्छा, राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण, जय श्री राम, नारायण नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya, and right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the dhoop batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the the dozens of flowers along with the dhoop batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग Lord Ram idol has been placed in Ayodhya Temple even as the grand consecration takes place. UP Chief Minister Yogi Adityanath to hold cabinet meeting today, days ahead of the grand consecration ceremony. Delhi Chief Minister summoned by the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. Will Kejriwal skip the summon again? Punjab Chief Minister Maan says Aam Aadmi Party to contest all 13 seats in Punjab. While Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. First test of the Aam Aadmi Party Congress alliance as both parties field joint candidates for the mayoral polls. And close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, has been arrested by the Enforcement Directorate in the BMC Khichdi COVID scam case. Very good morning, viewers. We are live from Ayodhya right now, but we start the bulletin with some breaking news coming in. Now, this with regards to the Shankaracharya Peetham, who is now contradicting India Alliance's claims. Shankaracharya Peetham contradicting India's assertion, and the mutt established by Shankaracharya voicing the perspective. Kudali mutt
has criticized the anti-temple propaganda of the India Alliance, emphasizing the historic significance of the temple inauguration originally established by Adi Guru Shankaracharya. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಬಲಿದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಂತರ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಮಾಲಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನರೇಟಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಂಕರ ಪರಂಪರೆಯ ಯತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 18 ಜನವರಿ 2024ರಂದು ನಾವು ಕೂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾಗಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಕಾಶಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು 21ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ಶಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಕಾರನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಂಬಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಯತಿಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೆಡೆಗೆ. ಕೆಲವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಯತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಬಲಿದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಂತರ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಮಾಲಯ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನರೇಟಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಂಕರ ಪರಂಪರೆಯ ಯತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 18 ಜನವರಿ 2024ರಂದು ನಾವು ಕೂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾಗಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ಕಾಶಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು 21ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ಶಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಕಾರನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಂಬಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಯತಿಗಳು, ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯೆಡೆಗೆ. ಕೆಲವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಯತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. And
again, viewers, we're getting you more news coming in. Remember, the 7-day religious plan, or you can say the rituals, have begun. The Pran Prashishtha, the 7-day rituals leading up to the Pran Prashishtha have begun. It's day 3. Remember, yesterday on day 2, last night we saw the Ram Lalla's idol landing finally at its rightful place, the Ram Temple, and we expect that today it will be placed in the Garbhagriha. So Lord Ram, or Ram Lalla, has finally arrived in his abode, what we know right now, and what we also are picking up that a special puja was also held before the idol is placed today in the Garbhagriha, that is the Sanctum Sanctorum. Rituals are also being performed in the run-up, remember, the 22nd of January. And a Kalash Puja was also held earlier on Wednesday, that is right where I'm standing right now, at the Ram Ki Paidi. A Kalash Puja was conducted by Yajman Dr. Anil Mishra and his wife Usha Mishra, who is the Yajman for these rituals, for yesterday's rituals. Yajman is the one who hosts. Like on 22nd of January, Prime Minister will be the main Yajman. And now, of course, what we know is that today is the day when the 51-inch Lord Ram Lalla's idol that depicts a 5-year-old Lord Ram will be placed. Yesterday we saw the truck, the golden truck that was carrying that idol, and today it will be taken to the Garbhagriha. Before that, the Garbhagriha has also been purified, energized with a series of rituals. Kalash Puja has already taken place, and remember, it is 22nd of January. Sorry. It's 22nd of January on 12:20 p.m. exactly, the Abhijit Muhurta, when the Pran Prashishtha of Lord Ram's idol will take place. That is the moment everybody is waiting for. And today, of course, viewers, we will be getting you all the latest updates throughout the day. But today we expect that Lord Ram's idol, Ram Lalla's idol, will be placed in the Sanctum Sanctorum of the Ram Janmabhoomi temple. So this is the latest updates we have right now. Remember, viewers, there are several important So as I was telling you, viewers, that Ram Lalla's idol is going to come, right now, is shortly going to enter the Garbhagriha. Very soon we will see. And right now I am at the Ram Ki Paidi, and you can see the atmosphere around me. If you can see, if my visuals are on air right now, viewers, we can see that this is the Ram Ki Paidi, this is the Saryu River, and you can see the beautiful scenes. There are puja also that is being held on the right hand side of me. I request my camera person Ranbir to turn around and pan the camera that side and see the ladies. They're conducting a special puja, and this is called the Guduriya Puja. This is a tradition in Ayodhya when someone's wish fulfillment happens. And this, of course, becomes even more special and grander when the Ram Janmabhoomi temple is going to be inaugurated in just less than 100 hours from now, viewers. The countdown has begun, and we are reporting with the biggest network of reporters on Republic TV, the biggest network. We're getting you the latest, and today is the day when we will see. Of course, we can't see the idol yet. For that, viewers, you have to wait till the 22nd of January. But it's, of course, a very important day. Officially, you can say the Pran Prashishtha ceremony the preliminary rituals are going to start. And I'm told my colleague Priyanka Sharma is joining us live from Kasevakpuram in Ayodhya. Priyanka, of course, the atmosphere is right now very enthusiastic all across Ayodhya. Tell us, what are you picking up from Kasevakpuram? Well, Rakshita,
we are of course been reporting here for quite some time, and we are looking at how gifts are pouring in from across the country. We also have people who are devotees, in fact, who have come in from across the country, and they are also, joining us right now, and they are also speaking to us. We'll try to get in a word from them, because there are gifts that are pouring in from across the country. There was a gentleman who had come with glass bangles imprinted with Lord Ram and Mata Sita. Apart from that, of course, there is also, a lot of movement of the ministers as well here. Let's get in a word from them. आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर मुद्रा सिंह अवध प्रांत की दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका हूँ, और मैं लखनऊ मेरा निवास है, लेकिन अवध प्रांत में चूंकि अपना अयोध्या जी भी आता है, तो हम लोग अभी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सेवा करने आए हैं। और भगवान श्री राम के इस इतने हजारों वर्ष बाद हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम सभी इसको इसके लिए अंदर से बहुत ही भावुक होकर के और अपनी पूरी सेवा देना चाहते हैं। तो हमारा क्या सेवा यहाँ पर आप देंगे, किस तरह से यहाँ पे आप सब लोग आए हैं? हम लोगों को जो भी निर्देश मिल रहे हैं, चाहे वो भोजन व्यवस्था में लोगों को प्रसाद वितरण से लेकर के आए हुए साधु संत साध्वियाँ और जो भी बहनें हैं, हम लोग उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के उनको भोजन और भी उनको हर प्रकार की हॉस्पिटैलिटी प्रदान कर रहे हैं। और दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें पूरे भारत से, विभिन्न प्रांतों से, अलग अलग हर जिले जगह से आए हुए हैं, और वो सभी लोग इस सेवा और प्रभु श्री राम के इस कार्य में हम सभी अपने को समर्पित कर रहे हैं। माँ जी, आप भी साथ में आए हैं, आप भी अपनी सेवा देने आए हैं, इसमें अभी भी आप भी जुड़ रहे हैं 22 जनवरी के लिए? तेलुगु अच्छा, हैदराबाद से भी देयर आर पीपल हु हैव कम। रक्षिता, आप बताइए, आप लोग क्या कुछ यहाँ पर सेवा देंगे? कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं? कितने लोग आए हैं? और क्या कुछ आप लोग अपने आप से भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अयोध्या में? मैं डॉक्टर सीमा इटावा से आई हूँ और पूरा छुट्टी लेके आई हूँ। यहाँ के कण कण में राम हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हमारे राम हैं, राम चारों तरफ वातावरण राम, जैसे मथुरा में राधे राधे होता है, ऐसे पूरा वातावरण कण कण में, क्षण क्षण में राम ही राम विराजमान है। और हम सभी बहनें, सभी विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनें सभी की व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं। हम सभी सौभाग्य है कि हम सभी की आंखें वो देख रही हैं दृश्य जो हमारे पुरखे नहीं देख पाए। जय श्री राम। So, this essentially is what the happiness really looks like on their faces. In fact, we have some more people who are, with the kalash as well that they are here with. आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ अभी यहाँ पे विधि विधान? मैं सिंगरपुर धाम से आया हूँ। भगवान के लिए जो है कलश लेकर जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है, और मैं निफादात बंसज डॉक्टर विजय कुमार निषाद, यह परम सौभाग्य मिला कि प्रभु ने त्रेता में जैसे याद किया, आज जो है कलयुग में भी याद कर रहे हैं। भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ त्रेता में, तो भरत जी ने पूछा कि प्रभु कोई छोड़ तो नहीं गया है? उस समय जो है प्रभु ने कहा कि ये भरत, मेरा परम मित्र जो है निषाद छूट गया है, उसको लेकर आओ। उसी तरह आज भगवान का जो है राज्याभिषेक को जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसा जो है न्याय का जो है आशीर्वाद मिला और सौभाग्य मिला कि न्याय की तरफ से न्योता मिला, और इस पावन क्षण पे जो है आने का सौभाग्य मिला हम लोगों को सपरिवार। अरे मतलब शब्द नहीं है, शब्दों में मैं उन शब्दों को मैं कह नहीं सकता कि आज जो हो रहा है, इतनी खुशी एहसास हो रही है, क्योंकि मैं तो शिलान्यास में भी आया था और आज इतनी अपार खुशी हो रही है कि खुशी का मतलब कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। So, Rakshita, that is the emotion here of the people here. This is a gentleman who's in tears, and they have come from across the country, and they have come across the country to Ayodhya to witness the consecration ceremony, to witness the temple being built, to witness their Lord Ram coming back to Ayodhya. Right, Amil, of course, right, Priyanka, we'll get you more we'll, of course, come back to you for more inputs as we are reporting with our biggest network of reporters at Republic TV. And right now, it's time for a very, very short break, viewers. On the other side, we continue with our updates and more inputs from Ayodhya. Stay tuned.
ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya, and right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with video journalist for Republic TV. Time to look at some other stories right now, viewers. Enforcement Directorate has conducted raids at several locations related to Prasanna Roy, a middleman in teachers' recruitment scam. ED is carrying out searches at 6 locations in West Bengal. Jammu and Kashmir administration seized ancestral property of former BJP cabinet minister Bali Bhagat in Kishtwar district. A revenue team was appointed to seize the property, including a sealed paramedical college within the premises. On a 2-day visit to Uganda, External Affairs Minister S. Jaishankar will lead the delegation at the 19th summit of the Non-Aligned Movement to be held in Kampala on the 19th and 20th of January. As Chandigarh mayoral polls 2024 commences, security has been beefed up outside Chandigarh Municipal Corporation office. 600 personnel CRPF jawans deployed to maintain law and order. अच्छा राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है, और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता, लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समा है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम
Ram 5, Ram Ram 6, Ram Ram 7, Ram Ram 8, Ram Ram 9, Ram Ram 10, Ram Ram 11, Ram Ram 12, Ram Ram 13, Ram Ram 14, Ram Ram 15, Ram Ram 16, Ram Ram 17, Ram Ram 18, Ram Ram 19, Ram Ram 20, Ram 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 ke Narayan Narayan जय श्री राम Narayan Narayan जय श्री राम जय जय श्री राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya, and right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the dhoop batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the the dozens of flowers along with the dhoop batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं. क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए? क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहे हैं. This is Republic Niva Bupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. Well, ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya, and right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV.
तरफ। अच्छा, राम में हो रखा है राम। Good afternoon and thank you for tuning in. You're watching live and breaking at 12. I'm Suesha Savant. Yes, the excitement is building up as just 4 days to go for the consecration ceremony on January 22nd. Meanwhile, we're getting live pictures of Prime Minister Modi. Let's cut across to it. Quick check of the headlines. Lord Ram's idol has been placed in the Ayodhya Temple even as grand consecration process is underway. UP CM Yogi Adityanath to hold cabinet meet with all the ministers as 4 days to go for the grand consecration ceremony. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal summoned by ED in Liquor Gate case. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says AAP will contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. First test of AAP-Congress alliance as both the parties field joint candidates for mayoral polls. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, has been arrested by ED in BMC Khichdi COVID scam case. Non-stop focus on the rituals that are being performed in Ayodhya. As remember, just 4 days to go for the consecration ceremony on the 22nd of January. Now, these rituals that are being performed over 7 days before the Pran Prashishtha ceremony. So it ideally began on the 16th of January and will continue till the 21st of January. Last night, the idol of Lord Ram was brought inside the Sanctum Sanctorum of the Ram Temple. Shri Ram Mandir Construction Committee Chairperson also said that a special puja was held in the Sanctum Sanctorum before the idol was brought inside. He also added that the idol is to be installed in the Sanctum Sanctorum today, that is the 18th of January. Rituals are being performed in the run-up to 22nd January. Kalash Pujan, that was also held earlier on Wednesday. Ram Temple Pran Prashishtha, that is set to begin at 12:20 p.m. on the 22nd of January, which has been chosen as the Shubh Muhurat, and it is expected to end by 1 p.m. on the 22nd January. Rituals that are ongoing in Ayodhya as recitation and mantra ucharan that is also taking place in the run-up to the 22nd of January. The big consecration ceremony that is later to happen at 12:20 p.m. on 22nd, and 7 days for 7 rituals is how it has been described. The ceremonies leading up to Pran Prashishtha ceremony that have already begun, and spiritual ceremonies that are being organized as informs the Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra. These are the Shastriya protocols, I beg your pardon, where the program of Pran Prashishtha will be held in Abhijit Muhurat in the afternoon of 22nd January 2024.
It was on the 16th when the temple trust had organized a special religious event called Prashishtha and Karmakuti Pujan. The priest appointed by the trust conducted a ceremony called Dashwit Bath ritual on the banks of river Saryu, and the ritual that involved worshipping Lord Vishnu. Again, today being the 18th of January, when 3 important events are planned, that includes Aushadhiya Divas, Kesara Divas and Ghrita Divas. We'll continue to get you more on how the ceremonies are being performed ahead of 22nd January, but for now, live pictures coming in of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi releasing commemorative postage stamps on Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Lord Ram around the world. Components of the design including Ram Mandir, Chaupai, Mangal Bhavan, Amangal Hari, Saryu River, Sun and sculptures in and around the temple. As India sings Ram tunes, the nation is counting down to the consecration ceremony for just 4 days to go, and Prime Minister unveiling those new stamps. Just to take you through the details, this stamp book that is being released by the Prime Minister on Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Bhagwan Ram around the world that include the components of designs that are Ram Mandir, Chaupai, Mangal Bhavan, Amangal Hari, Sun, Saryu River, sculptures in and around the temple. There are 6 stamps that include Ram Temple, Lord Ganesha, Lord Hanuman, Jatayu, Kevatraj and Mashabri. Let me straight away cut across to my colleague Priyanka, who's also live with us from Ayodhya along with Rakshita. Rakshita, if I can come to you before that, we stay with these pictures. Prime Minister inaugurating the commemorative postage stamps, and as the build-up is happening to the consecration ceremony on the 22nd of January, it certainly becomes symbolic to how it is Ram Ram everywhere. Absolutely, of course. Ram, Jai Shri Ram, chants are reverberating across Ayodhya, and I'm sure it's reaching the entire world. We are seeing the preparation underway, and as you mentioned about the stamps, yes, of course, this is been released. It's a commemorative postage stamp that reflects the components of the design, the Ram Mandir, and as you were mentioning about Mangal Bhavan, Mangal Hai, the Chaupai. And these are 6 stamps that have Ram Temple, Lord Ganesh, Lord Hanuman, and Jatayu, Kevatraj and Mashabri. These are all very important characters if I talk about the Ramayana. If I talk about the book, as far as the Ramcharitmanas is concerned, it's very important, be it Shabri, be it Lord Hanuman, or Jatayu, or Lord Ganesh, and we'll see a reflection of all those important characters in the Ram Temple as well. But this is, of course, will be having a gold leaf of sun rays also, because remember, Lord Ram is known to be Suryavanshi, descendant of the sun, and henceforth the imagery of the sun, or the sun, sunshine, or the sun rays becomes even more important. And of course, there will be a majestic icon of that in that miniature sheet, and 5 physical elements, that is the sky, air, fire, earth, water, that are the Panch Bhutas, will also be reflected. These are essential manifestations, of course, and this is not just for the country, but it has its own international appeal, Lord Ram, of Lord Ram across societies. Now, a 48-page book covers stamps issued by more than 20 countries, including US, New Zealand, Singapore, Canada, Cambodia, and also organizations like the UN. Also, of course, this is important to note that this is about Ram going global, if we can say that.
right now, as you were talking about how the imagery, and I was also detailing about it, the imagery that will be reflected in these 6 important stamps. And of course, it's very important to understand this 48-page book will be covering more than 20 countries, including, as I mentioned, US, New Zealand, Singapore, Canada, Cambodia, and also organizations like the UN. Back to the studio, Soyesha. Oh yes, absolutely, Rakshita. And we stay with those pictures. Prime Minister Narendra Modi inaugurating those postage stamps, and like you're rightly saying, that today the world is finding out more about our culture, our heritage, our mythological beliefs, where it is Lord Ram that is not just the god that is worshipped, but also the very being and the establishment where we are finding out more. And through these commemorative stamps, it is reaching out to 20 countries. It is an international appeal. And really, to come back to that point, Rakshita, as you stay with me, you know, it is the ambience in Ayodhya, that of course ahead of the consecration ceremony. But today it is not just about Ayodhya. Ayodhya certainly being the epicenter of where it is all happening, but the entire country expected to have a Diwali-like celebration on the 22nd of January. And it is not just restricted to India, but across the globe, that they are learning about our mythology, our beliefs, and our culture. Absolutely, you know, when, you know, here in Ayodhya, we are actually, when we interact with people, you know, these are people coming, and when I mention about people, individuals, these are across generations, you know, ever since we've been talking to people since, you know, last evening, you know, the young, old alike, they all have their own connect with Lord Ram or Ramayana. Either they have watched it or they read about it, you know, in the traditional scriptures. It's all something that is uniting the entire, you know, entire country. You know, there are people from Rajasthan, there are people from West Bengal, people from Karnataka are also, as we just broke that story, people from Bengaluru, a single flight which only has, you know, people from people going to Ayodhya. And there were chants of Jai Shri Ram at the Kempegowda International Airport also. So we can see it's north to south, east to west, it's all Jai Shri Ram. And as if I could show you around me, there are so many devotees here at the Saryu Ghat, at the Ram Ki Peri, who have gathered up for various pujans and also events that are taking place. There are you know, many bhajans. You can see, if you could hear. There are hymns being recited, there are bhajans being recited, and people are very excited, of course, ahead of that Ram Temple inauguration. Suyesha, अगर हम आपसे बात करें, कितनी उत्साह है आपको, क्योंकि इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी को? राम दवा है रोग नहीं है जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं है जगवालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम हमारे ऐसे उदात चेहरे हैं, भारत के प्रतीक हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, और जिस प्रभु श्री राम के चरणों में हम वंदन करने आए हैं, 500 वर्षों बाद मेरे प्रभु आए हैं। सदियों से हम पर दास्ता की जंजीर जकड़ी थी, हाथ हथकड़ियों की विकट परिधि में परिबद्ध थे, पैरों में कठोर बेड़ी बंधन था। हम भारतवासियों का मंगलमय प्रभात पराधीनता की नैश कारा में बंद था। वन बागों के वृंत वृंत पर मधुमाख का सुहाग सक रहा था। हम पर कटे परिंदों के दिल दर्द को भोगने को मजबूर थे। अभी आसमान अब्रे सियाह के शासन सिकंजों में जकड़ा सुबक रहा था, लेकिन सविता ने उषा को जले भाल पे सिंदूरदान नहीं किया था। ये सौभाग्य हम सनातनियों का। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम जब आ गए तो समझिए सनातनी जिंदाबाद हो गया। सनातन नहीं तो फिर क्या है? हमारी माटी, हमारी गौरव, हमारी सांस्कृतिक विरासत मेरे राम ही तो हैं। राम नहीं तो फिर क्या? जैसे राम का अर्थ ही है जो राष्ट्र धर्म को निभाए, तो राष्ट्र धर्म को जो निभाता है वही तो राम है। आज जो है रामलला का जो मूर्ति है रामलला की, वो आज गर्भगृह में प्रवेश करने वाली है। 22 तारीख को मेरे प्रभु आ जाएंगे, तो ये आनंद का विषय है और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, जिन्होंने रामलला को जो सौभाग्य बलिदानी परिपाटी जितने हमारे पुरखों ने किया, कार सेवकों ने किया, उस सबके लिए ये गौरव का क्षण है। पूरा भारतवर्ष हर्ष मना रहा है और
आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको कि आपने सनातनियों की प्रतिष्ठा को बहुत आगे बढ़ाया है, और मेरे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आपका प्रणाम निवेदित हो रहा है। मोदी जी ने अभी कुछ स्टैम्प्स जो है वो इनॉग्रेट किए, स्टैम्प रिलीज करें, इसमें जो राम जी हैं उनसे संबंधित तमाम जो चित्र हैं वो उसमें दिखाई देंगे, और ये इंटरनेशनल भी जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो है एक छवि बनती जा रही है जो लॉर्ड राम की हम देख रहे हैं किस तरह से। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये भारत की जो सरहदें हैं उससे भी पार करके जाते हैं, जहाँ तक बात है जय सिया राम की नारे की बात हो, चाहे वो राम जी से जो कनेक्ट है पूरे दुनिया में जो है वो छा रहे हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है, हम इससे इसलिए खुश हैं कि डाक टिकट क्या, पूरे भारत के हर क्षण पे राम होना चाहिए, हर कण कण में राम होना चाहिए, और राम तो सरहदों को जोड़ने वाले हैं। मुसलमानों के जो सबसे बड़े साहित्यकार, उन्होंने भी राम के पर किताबें लिखी, उन्होंने भी राम को सर्वश्रेष्ठ कहा। तो जो भारत से प्रेम करेंगे वो राम से प्रेम करेंगे, तो कोई भेदभाव नहीं। मोदी जी ने तो सबको जोड़ दिया है, ये गंगा जमुनी तहजीब के राम हैं, राम नहीं तो फिर क्या है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। So there you see, of course, we are getting so many reactions and people are so, enthusiastic, and it's a wave of positivity we see all around. Everybody is just waiting with a bated breath, and of course we can see art, culture, music, everything is something that is. विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है,
जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण, अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। राम किस तरह भारत से बाहर भी उतने ही महान आदर्श हैं। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है, रामायण का कितना गहरा प्रभाव रहा है, और आधुनिक समय में भी अनेक राष्ट्रों ने किस तरह उनके चरित्र की सराहना की है। ये एल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी की लीला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी। एक तरह से महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा, श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को
सभी देशवासियों को इन विशेष स्मारक पोस्टल स्टैम्प के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, राम राम। That is the message coming in from Prime Minister Narendra Modi as he has put out the importance of Lord Ram stamps that will have a global appeal, postal stamps that are a medium to pass on historical events to the next generation. Prime Minister Modi releasing those stamps as he says that this will enlighten the younger generation on Lord Ram and the story of Lord Ram and Sita that is beyond any societal barriers. It is Ramayana that connects the whole world and everyone to humanity and themselves. And Maharishi Valmiki's voice that is alive even today. Prime Minister Narendra Modi in those pictures as he has released the commemorative postage stamps of Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Bhagwan Ram around the world that include designs of Ram Mandir, Chaupai, Mangal Bhavan, Amangalhari, Sun, Saryu River, sculptures in and around the temple, 6 stamps that include Ram Temple, Lord Ganesha, Lord Hanuman, Jatayu, Kevatraj and Ma Shabri. That also includes the 5 physical elements, sky, air, fire, earth and water, known as Panchabhutas. And it is an attempt to showcase the international appeal of Shri Ram on various societies. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. हर तरफ अक्षर राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण जय श्री राम, नारायण नारायण जय श्री राम, जय जय श्री राम। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya. And right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the Dhoop Batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the the dozen. US and British military forces are conducting airstrikes in Houthi-controlled regions of Yemen, targeting cities such as
Taiz, Dhamar, Al-Baida and Sada US and UK airstrikes have been launched on urban areas in Yemen. Houthi rebels in Yemen launched missile drones targeting a US-owned vessel in the Gulf of Aden. Houthis confirmed that they launched the attack in response to earlier military actions by US and UK. UP CM Yogi Adityanath to hold cabinet meet today ahead of the grand consecration ceremony. That and much more on the other side. Do stay with us. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. Well, ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya. And right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1,265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1,265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1,265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1,265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV. Lord Ram's idol has been placed in Ayodhya Temple and is expected to be placed in the Garbhagriha today. UP Chief Minister Yogi Adityanath to hold a cabinet meeting today, 8 days ahead of the grand consecration. Delhi Chief Minister summoned by Enforcement Directorate today in the Delhi liquor policy case.
Will Kejriwal skip the summon again? Punjab Chief Minister says Aam Aadmi Party will contest all 13 seats in Punjab, while the Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. The first test of the Aam Aadmi Party Congress alliance as both the parties field joint candidates for the mayoral polls. And close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, has been arrested by the Enforcement Directorate in the BMC Khichdi COVID scam case. A very warm welcome, viewers. We are live and breaking from the city of Ayodhya, where all the action is taking place. The entire world is keeping its eyes on Ayodhya. As you can just hear me, here behind me, there is music, there are rituals going on, puja is going on, chanting is going on all across the city of Ayodhya. We are reporting live from Ram Ki Paidi right now, and we are getting you all the latest from Ayodhya in anticipation of the inauguration of Ram Temple. Viewers, now investor interest also in Ayodhya is only increasing. You know, everybody talks about religion and how it's important for the Sanatanis, but remember, it's important for the entire country. And this is not just from the point of view of culture or religion, but also as far as economy is concerned, development is concerned. Now, millions of pilgrims from across the globe, from across the world are expected to embark. In fact, here as I speak, we have interacted with several of pilgrims who have come from various corners of India. But also, if you talk about people from the world, we are understanding that there are projections of a potential daily footfall that could reach up to 3 lakh individuals. 3 lakh individuals, that is the expected, that is the projected landfall. So this is the latest we have right now. And for more on that, my colleague Shri Pandey has filed this report. Take a look. इस वक्त सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप भी दर्शन करिए रिपब्लिक भारत के माध्यम से प्रभु श्री राम लला के मंदिर की। ये बाहर से तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे नजदीक से। प्रभु राम का ये भव्य मंदिर किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये वो भव्य महल है प्रभु राम का जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, लोगों ने बलिदान दिए, कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ इंतजार करती रहीं कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजित होंगे। काम लगातार जारी है। मंदिर को परंपरागत नागर शैली से बनाया गया है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अगर लंबाई की फीट की बात करें तो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट की होगी। और अभी मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। मुख्य गर्भगृह में जिसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां श्री राम का बाल स्वरूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी मंदिर के भीतर मंडप होंगे, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, सभा मंडप और प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप भी होगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे नजदीक से हम आपको 100 घंटे पहले दिखा रहे हैं कि प्रभु राम का मंदिर बनकर यहाँ तैयार है। मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको 32 सीढ़ियों पर चढ़कर सिंह द्वार से गुजरना होगा और सिंह द्वार की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट साइड है मंदिर का, जो इस वक्त आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं। विजय निशांत आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। परकोटा बनाया गया है जिस तरीके से साउथ के, दक्षिण के
दक्षिण के मंदिरों में परकोटा होता है, वैसे ही यहाँ पर वो बनाया गया है और ये भव्य मंदिर की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन प्रभु राम के 23 तारीख से होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ अयोध्या नहीं पहुंचे हैं वो रिपब्लिक भारत के माध्यम से राम मंदिर की तस्वीर सबसे नजदीक से देख सकते हैं कि मंदिर कैसा दिख रहा है, वो राम का महल कैसा दिख रहा है, जिसके लिए आंख तरस गई थी लोगों की। लोग ललायित थे, प्रफुल्लित थे कि आखिरकार वो राम का दरबार कब बनकर तैयार होगा जिसमें हमारे राम लला विराजित होंगे। और ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं सबसे नजदीक से। रिपब्लिक भारत ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार है, इंतजार है। रामलला भी अंदर पहुंच चुके हैं और आज गर्भगृह में उनको विराजित भी कर दिया जाएगा और गर्भगृह में अनुष्ठानों की शुरुआत होगी जब मूर्ति विराजित होगी। उसके बाद रामलला विराजमान आप इनको तभी कह पाएंगे जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, यानी कि 22 तारीख के बाद से खुद प्रभु राम वास करेंगे राम की नगरी अयोध्या में बने इस भव्य राम मंदिर में। और ठीक बगल में निशांत एक तस्वीर आप और दिखाइएगा, ठीक बगल में आप देखेंगे कि लोगों की लंबी कतार यहाँ पर दिखेगी और यहाँ पर रामलला यहीं पर उनका स्थान है जहां अभी दर्शन हो रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए कि ठीक जन्मभूमि पथ पर और जहां इस मंदिर परिसर में आप देखिए इसके ठीक बगल में आपको एक नीले रंग का टेंट दिख जाएगा, उसी के अंदर रामलला वही रास्ता गया है जहां रामलला के अभी दर्शन हो रहे हैं और ये दर्शन जो है 20 तारीख तक होंगे। रामलला पहले टेंट में थे, उसके बाद मंदिर के फैसले के बाद उनको यहां पर विराजित किया गया और अब समय आ चुका है उन्हें उनके महल में विराजमान होने का, जिसकी एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड अब लोग इंतजार कर रहे हैं। देश के कोने कोने से नंगे पांव लोग यहाँ पहुंचे हैं, कोई पैदल आया है, कोई साइकिल यात्रा करके आया है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, वो इसी मंदिर की झलक देखने के लिए इसी आस और इसी उम्मीद से यहाँ पहुंचे हैं कि रामलला जो टेंट में थे, जिनके लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, एक जो अन्याय की बात लगातार यहाँ के लोग कहते हैं कि बड़ा अन्याय हमारे प्रभु राम के साथ ही किया गया, उसका फल जो है अब यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। प्रभु राम के मंदिर की एक एक झलक आप देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ में मंदिर को बनाया गया है। अंदर की जो तस्वीरें निकल कर आती है, देखिए दर्शन तो तभी होंगे 23 तारीख से, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, आपको बता दें कि इसमें सीधे तौर पर किस तरीके से आकृतियां बनाई गई हैं। भगवान गणेश जी की बात करें या हनुमान जी की बात करें, जटायु की भी प्रतिमा लगाई गई है। वो एक एक तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी मंदिर के भीतर की 23 तारीख के बाद। लेकिन आपको बताएं, परकोटे के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि मंदिर के भीतर, देखिए आप पैन करके थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइएगा, ये जन्मभूमि पथ का जो रास्ता है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ से लोग अभी मौजूदा जहाँ पर रामलला विराजित हैं वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और कुछ समय के बाद में मंदिर के ठीक भीतर उनके दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। और इसी के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रभु राम के उसी मंदिर की झलक है, उसकी एक छटा आपको हम लगातार यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परकोटे के चारों कोनों पर आपको बता दें सूर्यदेव होंगे, माँ भगवती होंगी, गणपति होंगे, भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण भी यहाँ अंदर किया गया है। और आपको बता दें कि माँ अन्नपूर्णा दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का भी मंदिर होगा और सीधे जब आप सिंहद्वार से एंटर करेंगे मंदिर में तो वहां पर हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। तो ये वो तस्वीर है और ये वो इसकी खूबसूरती है जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजन हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रैंप बनाए गए हैं, लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। जब मंदिर पूरा हो जाएगा, कॉरिडोर अभी बनना बाकी है, कॉरिडोर भी बनेगा और कॉरिडोर की खासियत मैं आपको बता दूं कि उसमें रामलला के लिए जो यज्ञ किया गया था, दशरथ जी ने जो यज्ञ किया था, वहां से लेकर जब वो सीता हरण का पूरा स्वरूप दर्शाया जाएगा और उसके बाद किस तरीके से लंका विजय की प्रभु राम ने और दोबारा जब उनका त्रेता युग में आगमन हुआ था अयोध्या में और किस तरह से दिवाली मनाई गई थी, वो एक एक तस्वीर मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई है प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हुई, यानी कि बाल्यकाल से लेकर और किस तरीके से वापस
अपने अयोध्या वापसी की थी प्रभु राम ने, उसकी एक एक मूर्ति के जरिए वो हर एक दृश्य दर्शाने की कोशिश की गई है। वो जब कॉरिडोर बनेगा तो वो पूरी मूर्तियां वहां स्थापित की जाएंगी, उन्हें शीशे के भीतर रखा जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। यानी कि जो लोग बहुत हद तक नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, जब वो भी यहाँ पर आएंगे तो वो राम मंदिर की कॉरिडोर से जब गुजरेंगे तो प्रभु राम के जीवन की एक एक छटा जो है वो उन्हें देखने को मिल जाएगी। And of course, we are seeing that how Ram Mandir connects the entire country and the world. As they say, Ram belongs to everyone, everyone belongs to Lord Ram. From Kashmir to Kanyakumari, we are getting you reports how Lord Ram is uniting all cultures. Here's a report filed by my colleague Arawat Mehraj from Jammu and Kashmir, and he tells you about Ram Lalla's connect with the valley. अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में जो मंदिर हैं जो कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में बंद हुए थे, हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने बंद करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में फिर से किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला आया है। मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव ऐसा मंदिर है कश्मीर घाटी में जो कहा जा रहा है 1990 से पहले यहाँ पे जो है लॉर्ड राम यहाँ आए हुए हैं इस लोकेशन पर। हालांकि आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर इसको माना जाता है। ये नॉर्थ कश्मीर के टॉप पर यहाँ पर स्थापित है। हालांकि मेरी विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। हालांकि अगर यहाँ पे अब मेरी विजय आपको दीवारें दिखा सकते हैं किस तरह से काफ़ी ओल्ड दीवारें हैं। हालांकि इसकी अगर हम बात करें जो यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं वो यहाँ पे BSF का है जो इसको यहाँ पर 24 घंटे इस पर नज़र रखते हैं। हालांकि इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये जो मंदिर है यहाँ पे जो 7 कुंड ऐसे हैं, हालांकि एक कुंड का नाम ऐसा भी है जो यहाँ पे है राम कुंड, सीता कुंड। उसके साथ साथ अगर हम इस चीज़ की बात करें जो यहाँ पे ये मंदिर है, लगातार यहाँ पे हम देख सकते हो किस तरह से कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यहाँ पे पार्ट लेते हैं। उसके साथ अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें जो ये मंदिर है, हालांकि 1990 से पहले की अगर हम बात करें इस मंदिर को पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे BSF को डिप्लॉय किया सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हम यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से इस मंदिर के हवाले से जानते हैं, यहाँ वो आते भी हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कंप्लीट डिटेल हमें बताएंगे कि ये मंदिर जो है जहाँ पे लॉर्ड राम आते थे और क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ होती थी। हालांकि मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है जय राम के भी यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं। अलग अलग जगहों पे हमने कुछ कुंड, यहाँ पे 7 कुंड जो है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर भी इस तरह की राइटिंग्स में लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर ये नॉर्थ कश्मीर का है। हालांकि इसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरह से इस लोकेशन की अगर हम बात करें, हालांकि इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि लॉर्ड राम यहाँ आए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी ये बिलीव रखते हैं कि वो यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। और उनका ये कहना है कि कश्मीर घाटी में किस तरह से मंदिर की रीओपनिंग्स एक बार फिर से हो रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव सीन है। विद विजय फिरदौस, रावत महराज, बारामूला, कश्मीर। Republic TV getting you the biggest coverage from Ayodhya and across the country and the run-up to the grand inauguration of the Ram Temple. I'm reporting live from Ayodhya right now. Time for a very, very short break, but on the other side, news and updates from Ayodhya and across the world continues. Stay tuned to Republic TV viewers. अच्छा राममय हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5,
Ram Ram 6, Ram Ram 7, Ram Ram 8, Ram Ram 9, Ram Ram 10, Ram Ram 11, Ram Ram 12, Ram Ram 13, Ram Ram 14, Ram Ram 15, Ram Ram 16, Ram Ram 17, Ram Ram 18, Ram Ram 19, Ram Ram 20, Ram Ram 21. नारायण नारायण जय श्री राम नारायण नारायण जय श्री राम जय जय श्री राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya, and right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the Dhoop Batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the dozens of flowers along with the Dhoop Batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं. क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए? क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहे हैं. हम लोग अयोध्या में दीनदयाल धाम से हैं. मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र यादव है. मैं वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. हम लोग दीनदयाल धाम से एक केसव धूप लेके आए हैं. ये जो केसव धूप है हम काव डंग से, काव यूरिन और गौ घृत से मिलके इसको बनाते हैं. और ये जो केसव धूप है, इस केसव धूप का जो बेसिक पर्पज है हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. Right now, breaking news coming in from the national capital. Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has responded to ED. Remember, he was summoned again, and now he has responded to ED with Aam Aadmi Party asserting that BJP's objective is to apprehend Kejriwal. Well, this is not the first time, viewers, we've seen this, what Aam Aadmi Party is saying. Aam Aadmi Party has accused the BJP of hindering Kejriwal's participation in Lok Sabha elections and questioning the ED's summons and arrest threats, emphasizing Kejriwal is not an accused according to ED's own communication. The Aam Aadmi Party also goes on to allege that corrupt leaders joining the BJP have their cases closed, and their party's commitment, that is Aam Aadmi Party's commitment to integrity, by stating that they are asserting their party's commitment to integrity, stating that none of their leaders will join the BJP as they have not committed corruption. So this is the latest we have right now. My colleague Piyush continues to join us with those updates on that story. Piyush, of course, yet again, so we understand finally that Kejriwal is all set to skip this ED summon yet again, repeating the allegations of politicization and vendetta, and also, of course, again saying that this is all to arrest. So Rashida, you rightly mentioned that yes, now it's completely confirmed that Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, is going to skip the summons for the agency. And as far as the unofficial response that has been given by him and Aam Aadmi Party regarding this, they have mentioned that this is clearly the objective by central agency at behest of a political party to apprehend and to arrest Arvind Kejriwal. Also, like earlier case, the similar pattern has been followed, in which Arvind Kejriwal has mentioned that what exactly is the objective of Enforcement Directorate to summon him. Is he being summoned as a witness, or is he being summoned as an accused? So this needs to be definitely replied by the Enforcement Directorate. Taking into consideration of the huge politics which have been involved as far as the summoning of Arvind Kejriwal is concerned, there has also been pot shots that have been levelled at Bharatiya Janata Party, in which Arvind Kejriwal, in an unofficial response, has stated that he
along with several of his party members, which have been harassed reportedly by the Enforcement Directorate. They are clean and they are full of integrity, and they are pressurizing them to join the Bharatiya Janata Party and thereby end Aam Aadmi Party, but they will not do so. They also claim that all those leaders who are otherwise facing charges, those leaders, when they join Bharatiya Janata Party, they become clean, they become full of honesty, and they become full of integrity. So this is all a pressure-building tactic by the Bharatiya Janata Party through Enforcement Directorate to malign the party, and they will not succumb to all these pressure-building tactics. Having said that, the most important question remains that when exactly would Arvind Kejriwal really adhere to the summon that is going to be issued to him by the Enforcement Directorate next, when the central agency plans to do so, because for the fourth time now, and it will be now very interesting to see that what exactly would the decision that would be taken by the Enforcement Directorate officials as far as giving the next summon to Arvind Kejriwal is concerned. Because as I said, there are a lot of questions, there are a lot of difficult questions that Arvind Kejriwal, the convener of Aam Aadmi Party, needs to answer to the central agencies who are investigating this entire case, which has already seen multiple arrests, including two prominent Aam Aadmi Party leaders, Sanjay Singh and Manish Sisodia. Back to the studio. Right, Piyush, just before I let you go, this one final question, a very short answer from you. What next for the ED? Because, as you just mentioned that, there are many questions that have been raised, but, Aam Aadmi Party, who always claims to be, in fact, their very, genesis is said to be, being a crusader against corruption. Cleaning up politics was Arvind Kejriwal was standing for. And today, when there are allegations against him and his own party members, that he's saying that this is only political vendetta. Or he also says that there is a threat of him being arrested. Days ago also, when there was the third summon, his party members and many ministers in Delhi were saying that he will be arrested by tomorrow, this and that. But what happens from here on? Because clearly there is no intention of appearing before the ED. You've raised very important points, Rakshita, and I will just mention all these points very shortly and in summary. Yes, integrity and honesty are the planks on which Aam Aadmi Party came to power in Delhi, and it is this idealism through which it has really marketed itself as. So thereby, when the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal now is being asked to appear before Enforcement Directorate, this is also a hit to its integrity and honesty. Thereby, you're going to see that the Aam Aadmi Party will take no stone unturned in trying to defend the leader and in trying to maintain its clean image. Having said that, there is no denying the fact that several of the top leaders of Aam Aadmi Party have been arrested by the central agencies, that includes the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation. Their bail has been rejected by the courts. So thereby, it becomes now very important for Arvind Kejriwal also to adhere to the summons, and it's going to be interesting to see that from here on, leaving aside the political rhetoric, will Arvind Kejriwal finally adhere to the summon that is going to be issued to him next by the central agency? Back to you. All right, thanks so much, Piyush, for joining us with those details. So once again, we are seeing Arvind Kejriwal skipping the summons of the ED in the liquor policy case. We'll get you more details, but right now, stepping to a very, very short break, viewers. But on the other side, we'll get you more updates from Ayodhya. Remember, Chief Minister Yogi Adityanath is all set to hold a cabinet meeting today in the run-up to the grand inauguration ceremony. All that and much more on the other side. Stay tuned. Well, ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya. And right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say
that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV. A very good afternoon, viewers. We are live and breaking from Ayodhya, and where all the action is taking place. We will get you all the latest reports. But first, let's take a look at all the top stories making headlines. Prime Minister Modi releases Ram Janmabhoomi stamp, says postal stamps will enlighten the younger generation. Lord Ram's idol has been placed in the temple to be moved to the Sanctum Sanctorum today. Delhi Chief Minister summoned by Enforcement Directorate today in the Delhi liquor policy case. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says Aam Aadmi Party will contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. High drama in Chandigarh polls as Aam Aadmi Party Congress councillors protest outside the Municipal Corporation office. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to hold a cabinet meeting today, just days ahead of the grand consecration ceremony in Ayodhya. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chauhan, has been arrested by the Enforcement Directorate in BMC Khichdi COVID scam case. All right, we're getting in news right now. Expelled TMC MP Mahua Moitro has filed eviction order
has approached the High Court once again against the eviction order. And she has recently, remember, received the eviction order on the 16th of January. She had earlier withdrawn her plea and she approached the estate officer. And now we understand she has approached the High Court against the eviction order. She received orders on the 16th of January to evict the government bungalow. Our colleague Madhurima Mishra, tracking developments, is joining us on the phone line for more. Madhurima, tell us more details about this. Mahua Moitro has now approached the High Court. Well, yes, absolutely, Rakshita. Ms. Moitro has approached the High Court against the multiple eviction notices that have been sent out to her for her residence at Telegraph Lane. Remember, this is not the first time on January 16 that Ms. Moitro had received an eviction notice. It was indeed a reminder notice because ever since she was disqualified in the winter session of the parliament, she was, in 2 weeks or so, she was asked to, vacate her residence at the Telegraph Road in the capital that is supposed to be for a member of a parliament, but being a tad rigid, Ms. Moitro declines to do so. First, she did not respond to the first notice, and after the second notice was sent out on January 16th, now we see her approaching the High Court once again against her eviction. We'll have to wait and watch as to what the High Court says, because earlier she had once withdrawn her pleas and was directed by the authorities to approach the state officer. But even after that, she was sent out another eviction notice. So once again, Ms. Moitro is going to amend her appeal and approach the High Court again. Rakshita. Right. Thank you so much, Madhurima, for joining us with those details. But before I let you go, just tell us more. Just give us a background, because what can we expect from here on? Because we saw what happened on 16th, and she was asked to, of course, evict the bungalow, the government bungalow given to her. But what are the chances of any decision going in her favor or against her? Well, the chances for the court to give an order in her favor are very skim, Rakshita, because it is acting according to the protocol. The government is acting according to the protocol, and the notice that is being sent out to her are being sent by the authorities that take care of these government bungalows. And there is not much to contest here, because these bungalows are meant for member of parliaments, and now that she's not one, it would be judicious of her to vacate that bungalow, because multiple eviction notices have already been sent out. So we'll have to wait and watch as to what she could really put in front of the court that would consider her plea in the first case to begin the hearing. We'll have to wait and watch on what date will the hearing begin, and will the court even accept the plea or not, Rakshita. Right. All right. Thanks so much, Madhurima, for joining us with those details. So that is the latest we have right now. Mahua Moitro has approached the High Court against the eviction order. And we are back with our coverage on Ayodhya and the preparations for Ram Temple. Now, we are getting you all the angles. We're covering everything about Ram Temple and how it's impacting not just Ayodhya, not just Uttar Pradesh, but also the country. It's a part of India's development, not just culture, not just history, not just tradition. And now, what we are getting to know is that in anticipation of the grand new Ram Temple in its inauguration, we are expecting more and more pilgrims. We are expecting pilgrimage from across the length and breadth of the country, but also from across the world. Millions of pilgrims are expected to embark on pilgrimages to this site where we are right now, and it's being projected that there could be a potential daily footfall up to 3 lakh individuals can turn up in Ayodhya for darshan of Lord Ram Lalla. Now,
heightened spiritual tourism coupled with natural boost the tourism sector usually experiences during the third quarter. It has led to a surge in hotel and travel stocks as well. And there is an increasing investor interest also in Ayodhya. 6 notable stocks have come into focus as the grand Ayodhya Ram Mandir inauguration approaches. My colleague Shri has filed this report for more on this. Well, right now I am in Ram Ki Pyari Ghat, and this Ram Ki Pyari has turned into the biggest tourist attraction here. Here in Ram Ki Pyari, you can see the Sarayu Nadi, the Sarayu River here, and lots of people are here. Sadhu, Sant, people from different districts are here, and along with that, we have people from different communities also. We have Shiraj Bhai with us, we have Ashu Bachchan with us. Bachchan ji, आपको स्वागत है. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया. अच्छा, आशु बच्चन जी is here, along with that Sania Malik is here, and Pura Dholak Bhai is here. तो हमारे पूरा इंडिया को Song baby song by Nor Max Sound DJ Max yo Virat Kohli आशु बच्चन जी के साथ. तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? हिंदी में क्या सुनाना चाहेंगे? पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, अभी बाहर से भी, बहुत फॉरेन कंट्रीज से भी रिपब्लिक वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं. क्या सुनाना चाहेंगे उनको? मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, ओ तू नहीं आया, आ गए सारे मेरे राम जी वे आएंगे, मेरे राम जी वे आएंगे. ओ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको बुलाएंगे. यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान ही लहराएंगे. दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे. योगी जी आए हैं, मोदी जी आए. You can feel the fervor here. You can feel the color here from the Lata Mangeshkar Chowk and adjacent Padi Chowk, the place where the Ram Ki Pauri is here. You can see lots of people, the sadhus here. Baba ji, आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल से आप आए. आप कहाँ से आए बाबा जी? अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं फिलहाल? कार्यक्रम में आए हैं. So you can see साधु संत. माता जी आप लोग कहाँ से? अयोध्या के जहाँ मेरा मैका है, राम जी के यहाँ से आए हैं, पास में ही रहते हैं आप लोग? मेरा मैका है यहाँ पे, यहीं पैदा हुए हैं. तो राम जी तो वापस आ रहे हैं इतने साल के बाद. हाँ, तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे माता पिता आ रहे हैं. इतनी खुशी है कि तो ये दीपावली की तरह है. और क्या दीपावली मनाया जाएगा. तो जो लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो वो लोगों को क्या कहेंगे? राजनीति वाले को? राजनीति वाले राजनीति करते रहे, हमारे माता पिता तो हैं, राजनीति करते रहे. So you can see the flavor here. The locals here are saying that their parents are coming back after so long, and those politicians who want to do politics, let them do politics, but they are going to celebrate the homecoming of Jai Shri Ram, and most importantly Rama coming back after so many years is becoming the biggest event in the world right now. And you can see lots of people just sitting in the banks of Sarayu. The locals here giving shops, there's lots of people who are taking a bath, and most importantly, it's a festival mood here right now, just before the Pran Prashishtha ceremony conducted by Prime Minister Modi. From the banks of Ram Ki Pyari, this is Mayuk Ranjan Ghosh reporting for Republic Ayodhya. So it's a 500-year-long wait, viewers, and the excitement is only peaking in Ayodhya and, of course, in the entire country. We're getting you reports from north to south, east to west, and how Lord Ram belongs to everybody and how everybody belongs to Lord Ram. Here's a report filed by my colleague Arawat from North Kashmir, where he's telling you how Baramulla has a temple, has a resident of and a caretaker of a temple, and its connection with Lord Ram. Take a look.
अयोध्या से पहले कश्मीर घाटी में अगर हम देख रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में जो मंदिर हैं जो कि 1990 से पहले कश्मीर घाटी में बंद हुए थे, हालांकि उनकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने बंद करवा दी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में फिर से किस तरह से एक्टिविटी शुरू हो रही है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला आया है। मेरी वीडियो आपको दिखा सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव ऐसा मंदिर है कश्मीर घाटी में जो कहा जा रहा है 1990 से पहले यहाँ पे जो है लॉर्ड राम यहाँ आए हुए हैं इस लोकेशन पर। हालांकि आप देख सकते हो विजुअल्स में किस तरह से काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर इसको माना जाता है। ये नॉर्थ कश्मीर के टॉप पर यहाँ पर स्थापित है। हालांकि मेरी वीडियो आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। हालांकि अगर यहाँ पे आप मेरी वीडियो आपको दीवारें दिखा सकते हैं किस तरह से काफ़ी ओल्ड दीवारें हैं। हालांकि इसकी अगर हम बात करें जो यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं वो यहाँ पे BSF का है जो इसको यहाँ पर 24 घंटे इस पर नज़र रखते हैं। हालांकि इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये जो मंदिर है यहाँ पे जो 7 कुंड ऐसे हैं, हालांकि एक कुंड का नाम ऐसा भी है जो यहाँ पे है राम कुंड, सीता कुंड। उसके साथ साथ अगर हम इस चीज़ की बात करें जो यहाँ पे मंदिर है, लगातार यहाँ पे हम देख सकते हो किस तरह से कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यहाँ पे पार्ट लेते हैं। उसके साथ अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें जो ये मंदिर है, हालांकि 1990 से पहले की अगर हम बात करें इस मंदिर को पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट को जलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे BSF को डिप्लॉय किया सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हम यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से इस मंदिर के हवाले से जानते हैं, यहाँ वो आते भी हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटी की हम बात करें, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या हिंदू कम्युनिटी की बात करें, जो कंप्लीट डिटेल हमें बताएंगे कि ये मंदिर जो है जहाँ पे लॉर्ड राम आते थे और क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ होती थी। हालांकि मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है जय राम के भी यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है। अलग अलग जगहों पे हमने कुछ कुंड, यहाँ पे 7 कुंड जो है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पर भी इस तरह की राइटिंग्स में लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मंदिर ये नॉर्थ कश्मीर का है। हालांकि इसके साथ साथ आप देख सकते हो किस तरह से इस लोकेशन की अगर हम बात करें, हालांकि इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि लॉर्ड राम यहाँ आए थे और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी ये बिलीव रखते हैं कि वो यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। और उनका यही कहना है कि कश्मीर घाटी में किस तरह से मंदिर की रीओपनिंग्स एक बार फिर से हो रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव सीन है। विद विजय फिरदौस, रावत महराज, बारामूला, कश्मीर। There's just 4 days left for the grand consecration ceremony in the Ayodhya Ram Temple, and there's a very important site just a few kilometers away, just like 10 to 15 minutes away from Ram Temple. That is the point where I'm standing right now. That is Ram Ki Peri. And as you can see behind me is the Saryu River. This is a canal that actually channelizes the Saryu River water. And in the morning, my colleague in Priyanka Sharma filed this report from the banks of Saryu, where she spoke to the sadhus and saints and also the main pujari, and what they have to say about the historic moment that is going to take place on 22nd of January. Let's take a listen in. Well, from the banks of the Saryu River, I'm being joined by the local artists, the poets, the singers, the artists, in fact, who have given their heart and soul to Ayodhya and waiting for 22nd of January, waiting for the consecration ceremony. Let's straight away go to them to understand how their feelings are as they are trying to express so close to the 22nd of January. आप बताइए, आप कवि हैं, क्या बताना चाहेंगे? 22 जनवरी आ रही है, राम लला वापस आ रहे हैं, भगवान का मंदिर बन रहा है। 500 साल की जो बताते हैं कि 500 साल की जो लड़ाई है, अब मंदिर बनने के बाद थोड़ा अब सुकून है। जी, सुकून तो वही है। मैं कविता में ही बात करता हूँ कि आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं, आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं, टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छबिछाए हैं, टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छबिछाए हैं, पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की, पूर्ण हुई है सदियों की वो आज। Main priest, in fact, is joining us right now, who will, in fact, carry out the Pran Prashishtha and the consecration ceremony that will carry out on 22nd of January. But उससे पहले भी कई सारी पूजा अर्चना हो रही है, कई सारे जो इसमें रिचुअल्स हो रहे हैं। कल रात में हमने देखा कि जो मूर्ति है उसको जो मंदिर के अंदर लेके जाया जा चुका है। इसके आगे क्या कुछ अब रिचुअल्स होने वाले हैं, क्या कुछ पूजा अर्चना होने वाली है? आज से प्रधान पूजा प्रारंभ हो चुकी है, मतलब होने वाली है 1:30 बजे। 1:28 का मुहूर्त है।
हम लोग वहीं पर अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो सभी कार्य की निर्विघ्नता के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गणेश पूजा का विधान है। तो ये करीब 1-1:30 बजे सभी पूरे भारतवर्ष से पधारे लोग जो हैं ये लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गणेश अंबिका पूजन से इस कार्य का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। आज जल यात्रा जिसे कहते हैं वो भी आज हो रही है, उसमें क्या कुछ होता है, उसमें क्या कुछ विधि विधान? जल यात्रा तो कल हो गई। कल हम लोग सरयू गए थे, वहाँ से सरयू नदी का जल वर्धिनी कलशों में 9 कलशों में भरकर ले आए हैं। आज जलाधिवास शब्द का जलाधिवास होना है। जलाधिवास में मूर्ति जो होती है उसका कई प्रकार से संस्कार किया जाता है। कभी जल में है, कभी अन्न में है, कभी फूलों में है, कभी फलों में है, कभी घी में है। तो ये सब प्रक्रिया आज से आरंभ होगी। उसमें सबसे पहले आज शाम को मूर्ति को जलाधिवास कराया जाएगा, मूर्ति को जल में बिठाया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होने वाला है 22 जनवरी तक? और आज अगर ये हो रहा है तो कल और परसों फिर क्या क्या विधि विधान? कल जो है भगवान अपने मंडप में अग्नि का प्रकट्य होगा, अग्नि प्रकट की जाएगी। वो अरणि मंथा एक विधि होती है, उससे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं और उस दिव्य अग्नि को जो है, जो 9 कुंड हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन 9 कुंडों में वितरित किया जाएगा। और उसके बाद नवग्रहों की पूजा पहले होगी और नवग्रहों की आहुति, एक कुंड पर 4 ब्राह्मण बैठ करके नवग्रहों की शांति होगी। वहाँ से ये हवन कार्य कल से प्रारंभ होगा। उसमें प्रतिष्ठा का भी होम है, राम जी के नाम से भी आहुतियाँ पड़ेंगी। ये सब कार्य कल से प्रारंभ होगा। और आपको मैंने जैसे बताया 12 अधिवास हैं, कभी फूलों में, कभी ये सुबह शाम करके इसको डिवाइड करके हम लोग ये 21 तारीख तक करते रहेंगे। और फिर एक दिन 21 तारीख को जो है भगवान का 96 कलशों से स्नान है। तो उन कलशों में आपने पता होगा कई तीर्थों के जल आए हुए हैं यहाँ पर। तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों के जल होंगे, वृक्षों के पत्ते होंगे, फूल होंगे और फल होंगे और नवरत्न पंचरत्न ये सब जो हैं, इन सबको डाल करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। तो उस स्नान के बाद भगवान जो है रात को 21 तारीख की रात को एक उनके लिए पलंग बनाया गया है, उसमें वो शयन करेंगे और फिर सुबह उठ करके प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जो परिक्रमा की बात की जा रही थी कि मूर्ति को परिक्रमा पहले कराई जाएगी, उसका क्या मान्यता है और कब वहाँ पे होगी, किस तरह से ये परिक्रमा की मान्यता यह है कि भगवान पूरे शहर को जहाँ जहाँ घूमेंगे सारे तीर्थों को, देवालयों को भगवान देख लेते हैं। एक प्रकार से ये भावना है। जन सामान्य भी उस मूर्ति को देख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ संभव नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से उस कार्यक्रम को मंदिर के अंदर ही कर लिया गया है। मतलब शास्त्र विधि भी हो जाए और उसका वो भी ना हो, तो वो कार्यक्रम हो गया है। तो कल शाम को ये कार्यक्रम हुआ था 4 बजे। मूर्ति को पालकी में रख करके एक सुंदर पालकी बनाई गई थी और वो पूरे मंदिर के चारों तरफ उसकी एक परिक्रमा करवाई गई। तो ये कार्य कल संपन्न हो चुका है। गर्भगृह में मूर्ति को अब रख दिया गया है और उसको जो आंख पे पट्टी बांधी होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए कि अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कब खोली जाएगी, किस तरह से खोली जाएगी? ये पट्टी बांधी गई है, ये जिस दिन शाम को 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उसी दिन ये मूर्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से ये पट्टी खोली जाती है। लेकिन यहाँ भगवान का जो प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है 22 तारीख को है, तो मुझे लगता है सर्वसामान्य को वो दृश्य देखने को मिलेगा। 22 तारीख को ही भगवान का नेत्र, मतलब सभी लोग पर्दा खुलेगा और सब लोग पहली बार जब देखेंगे भगवान को, तो वो 22 तारीख को ही, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो जो विधि होगी उस दिन प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसी समय देखने को मिलेगा। वो आईना दिखाएंगे उस जी। और अभी गर्भगृह में मूर्ति रख दी जा चुकी है, परिक्रमा वगैरह अंदर हो चुकी है? जी, ये सब कार्यक्रम अंदर हो चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। In other news now, Aam Aadmi Party Gujarat Chief Visudan Gadvi stated that Aam Aadmi Party Gujarat unit has decided to organize a 3-day Ram Mandir Pran Prashishtha Mahotsav. They are also planning to organize Sundarkand parts in all districts of the state. Perfume brand Bareli's businessmen prepare special perfume and Kesar Dhoop dedicated to Shri Ram Mandir Pran Prashishtha ceremony in Ayodhya. Met Department launched a new page for Ayodhya weather forecast, pages for ease and convenience for the people visiting Ayodhya. Karnataka Congress MLA Krishnappa says that he is an Indian and so worshipping God is a personal opinion. Religion is not an issue for the people in Karnataka. He also said that there is no need of permission from Congress to visit the Mandir.
And Shri Padmanabha Swami Temple in Kerala will be gifting an Onavilu, which is a ceremonial bow, a ceremonial bow, in fact, today in a function as part of the consecration ceremony in Ayodhya. Time for a short break. Time for a short break, viewers, but on the other side is Chief Minister Yogi Adityanath, all set to hold a cabinet meet today, days ahead of the grand inauguration of the Ram Temple. News and updates continue on the other side. Stay tuned. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. हर तरफ अक्षर राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समा है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। नारायण नारायण जय श्री राम, नारायण नारायण जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अंजनी च्या सूता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya. And right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the dhoop batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the dozens of flowers along with the dhoop batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन रहे हैं। हम लोग अयोध्या में दीनदयाल धाम से हैं। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र यादव है, मैं वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग दीनदयाल धाम से एक केसव धूप लेके आए हैं। ये जो केसव धूप है हम काव डंग से, काव यूरिन और गौ घृत से मिलके इसको बनाते हैं। और ये जो केसव धूप है, इस केसव धूप का जो बेसिक पर्पज है, हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं नॉन मिल्किंग काव में, उसके लिए हम लोग इस पे हम काम कर रहे हैं इस पे। This is Republic Niva Bupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. Well, ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya. And right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is
1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV. Are the Muslims a part of this celebration? We are just days away from the Pran Pratishtha of the Bhavya Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality? What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram Temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3, everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. And we are tracking every development ahead of the Ram Mandir inauguration. That's the top story. We'll get to you all the details of that. But first, the headlines we're tracking at this moment. PM Modi releases Ram Janmabhoomi stamp, says postal stamps will enlighten younger generation. Lord Ram's idol has been placed in the Ayodhya Temple to be moved to Sanctum Sanctorum today. Delhi CM summoned by the Enforcement Directorate today, the Delhi liquor policy case. Punjab CM Man says Aam Aadmi Party will contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. High drama in Chandigarh polls as Aam Aadmi Party Congress councillors protest outside Municipal Corporation office.
UP CM Yogi Adityanath to hold cabinet meet today, just days ahead of the grand consecration ceremony at Ayodhya. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, has now been arrested by the ED in the BMC Khichdi COVID scam case. In anticipation of the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya scheduled for Jan 22nd, the city has experienced a significant surge in investor interest. Millions of pilgrims from around the world are expected to embark on pilgrimages to the revered site, prompting projections of a potential daily footfall reaching up to 3 lakh individuals. The heightened spiritual tourism, coupled with the natural boost a tourism sector usually experiences during the third quarter, has led to a surge in hotel and travel stocks. 6 notable stocks have come into focus as the Ayodhya Ram Mandir inauguration approaches. Let's go straight to my colleague Priyanka, who's joining us live from Ayodhya. Priyanka, we are seeing that it's a big countdown here in Republic TV for the Ram Mandir inauguration, and a lot of details coming in. If you could take our viewers to the latest. Also, we know the Prime Minister has launched postage stamps dedicated to Ayodhya's Ram Mandir. And that essentially, Shivangi, shows us how the entire nation is awaiting the 22nd of January. A very special moment, in fact, we're trying to capture with our cameras from where we are standing right now. In Ayodhya, in fact, this is the beginning of the Chappan Bhog that will be made for the 22nd of January, after which it will, in fact, as a prasad, will also be distributed in the rest of the country. Let's take our viewers through as to what exactly is going to be made here, because you can see that the puja, in fact, of these particular vessels had also just been carried out. You can see buckets full of ghee that is kept here, and along with that flour as well. There are laddus being made as we speak. That is the first part that is going to be made. The cooks, the halwai as we call it, are in fact hard at work. We will try to speak to some of the officials here to help us understand better as to how exactly all of this prasad is also going to be made and how it is going to be distributed in the rest of the country as well. So because as of now we are looking at laddus, sir, हम देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, हलवाई लोग सब काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है, ये जो उनके बर्तन है उनकी पूजा भी हो चुकी है. थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है छप्पन भोग में, क्या कुछ प्रसाद की तरह बने. देखिए, अभी यहाँ पर हमारे ये जो भोग स्टार्ट हो रहा है बनना, उसमें यहाँ पर बूंदी प्रसाद बन रहा है. ये पूरे देश में वितरित होगा और इसकी 3 से 4 हफ्ते की लाइफ होगी, जिससे पूरे देश में आसानी से चला जाए और सभी राम भक्तों को मिल जाए. इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो स्थान है वहाँ पर 56 भोग बन रहे हैं, और उसमें क्या है कि सभी लोग अपने प्राण से लगे हुए हैं भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में. तो जो सारे भोग बन रहे हैं वो भी बहुत दिव्य और भव्य बन रहे हैं, जिससे कि वो सभी की फीलिंग्स उसमें ऐड हो सकें और पूरे देश में जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, सीताराम सरकार के फॉलोअर हैं, उसमें वो सब अच्छा रहे. इसके लिए अभी श्री राम जी की ननिहाल जो दंडकारण्य में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ सामान आया है. और जनकपुर और सीतामढ़ी, जो माँ सीता का माँ भूमिजा जिनको हम कहते हैं, धरती पुत्री, उनके मायके से भी कुछ सामान आया है. कहीं से मेवा आ रही है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है. तो ऐसे करके संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है और विश्व के अनेक देशों से भी लोगों ने अपना सहयोग किया है. उन सब जो कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं से जो अयोध्या में लेकर आए थे, उसका भी अब इसमें उपयोग हो रहा है. जो 56 भोग बनाया जाएगा और ये 22 जनवरी को लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद भी भेजा जाएगा. उसमें क्या कुछ बनेगा? और ऐसा है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की इच्छा और कृपा से है. उसमें हम लोग तो एक माध्यम है और
वो जो प्रभु चाहेंगे वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी क्या है, क्या क्या बन रहा है, ये राम जी की कृपा है। वो जो जब वितरित होगा तो सारा देश देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी है और क्या भोग प्रभु को अर्पित हुआ और क्या वितरित हुआ। इस वक्त यहाँ पे खाली अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं। जी, यहाँ ये भोग बन रहा है और बाकी जगह पर और भी चीज़ें हैं। So you can see, Shivangi, you know how essentially the preparation is going on, because this is the first beginning of, in fact, the prasad that is going to be given to the devotees from 22nd of January, after which will be distributed in the rest of the country. That has now begun, and in fact there was a puja that was carried out of all of the vessels, and now the cooks and the halwai, in fact, are hard at work. They're making the prasad that will be distributed not just to the devotees who will be able to be in Ayodhya on 22nd, but also in the rest of the country as well. Shivangi, back to you. And viewers, we are getting you all the details. Priyanka, I'll come back to you in just a moment, because we have all our correspondents and reporters on ground in Ayodhya. This is a huge team on Republic which is getting us all the details. Reporting directly from Ground Zero at Ram Ki Peri, Republic brings you the latest updates, capturing the excitement building up with just 4 days left for the Pran Prashishtha. Here's more. Well, right now I am in Ram Ki Pyari Ghat, and this Ram Ki Pyari has turned into the biggest tourist attraction here. Here in Ram Ki Pyari, you can see the Sarayu Nadi, the Sarayu River here, and lots of people are here. Sadhu, Sant, people from different districts are here, and along with that, we have people from different communities also. We have Shiraj Bhai with us, we have Ashu Bachchan with us. Bachchan ji, आपको स्वागत है. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया. अच्छा, Ashu Bachchan ji is here, along with that Sania Malik is here, and Pura Dholak Bhai is here. तो हमारे पूरे इंडिया को song baby song by Indore Max Sound DJ Max yo Virat Bachchan Ashu Bachchan जी के साथ. तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? हिंदी में क्या सुनाना चाहेंगे? पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, अभी बाहर से भी, बहुत फॉरेन कंट्रीज से भी रिपब्लिक वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं. क्या सुनाना चाहेंगे उनको? मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, ओ तू नहीं आया, आ गए सारे मेरे राम जी वे आएंगे, मेरे राम जी वे आएंगे, ओ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको बुलाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान ही लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे. योगी जी आए हैं, मोदी जी आए. You can feel the fervor here. You can feel the color here from the Lata Mangeshkar Chowk and adjacent Padi Chowk, the place where the Ram Ki Pauri is here. You can see lots of people, the sadhus here. Baba ji, आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल से आप आए. आप कहाँ से आए बाबा जी? अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं फिलहाल? कार्यक्रम में आए हैं. So you can see साधु संत. माता जी, आप लोग कहाँ से? अयोध्या के जहाँ मेरा मैका है, राम जी के यहाँ से आए हैं, पास में ही रहते हैं आप लोग? मेरा मैका है यहाँ पे, यहीं पैदा हुए हैं. तो राम जी तो वापस आ रहे हैं इतने साल के बाद. हाँ, तो कितनी खुशी की बात है कि हमारे माता पिता आ रहे हैं. इतनी खुशी है कि तो ये दीपावली की तरह है. और क्या दीपावली मनाया जाएगा. तो जो लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे, तो वो लोगों को क्या कहेंगे, राजनीति वाले को? राजनीति वाले राजनीति करते रहे, हमारे माता पिता तो हैं, राजनीति करते रहे. So you can see the flavor here. The locals here are saying that their parents are coming back after so long, and those politicians who want to do politics, let them do politics, but they are going to celebrate the homecoming of Shri Ram, and most importantly Rama coming back after so many years is becoming the biggest event in the world right now. And you can see lots of people just sitting in the banks of Sarayu. The locals here giving shops, there's lots of people who are taking a bath, and most importantly, it's a festival mood here right now, just before the Pran Prashishtha ceremony conducted by Prime Minister Modi. From the banks of Ram Ki Pyari, this is Mayuk Ranjan Ghosh reporting for Republic Ayodhya. From the land of Firozabad,
Uttar Pradesh, which is known for glass art, comes 20,000 bangles to the land of Ayodhya. The bangles have beautiful inscriptions of Lord Ram and Sita. Let's take a look at this report by my colleague Priyanka. From across the country, there are gifts and offerings that are pouring in to Ayodhya, and people are in fact making and crossing a journey of 1,000 kilometers to come to Ayodhya with their offerings and their gifts. One such gentleman in fact is joining us right now from Firozabad, who have brought bangles that have been plated with golds and also the images of Lord Ram and Sita that have been embedded in these bangles as well. So these are the special bangles in fact that have been brought in. Of course, a very special part of it is that these are around 20,000 bangles that have been brought in especially for the Pran Prashishtha, for the consecration ceremony, and for essentially to be given to the devotees on the 22nd of January as well. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. आप फिरोजाबाद से आए हैं, पूरा ट्रक भर के मैं देख रही हूँ कि ये चूड़ियाँ लेकर आप आए हैं. कितनी चूड़ियाँ यहाँ पर लेकर आए? ये 20,000 कंगन है. 2 कंगन का एक पैकेट है, ऐसे 10,000 पैकेट लाए जी. 10,000 पैकेट आप लेकर आए हैं और 22 जनवरी को देने के लिए आए. जी जी जी, श्रद्धालुओं को कमेटी बांटेगी और ये विशेष तौर से बनाए गए हैं. ये एक तो बगैर जॉइंट का है और ये गोल्ड प्लेटेड इसमें है, गोल्ड लगा हुआ है. और ये विशेष बात इसमें ये है, हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों कारीगरों ने मिलकर. कितने दिन लगे आपको ये 20,000 कंगन इकट्ठा करने में, बनाने में? 6 महीने से लगातार कार्य चल रहा है. प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई थी, उसी दिन से शुरुआत हो गई थी इस काम की और आज आपके सामने है और बरकरार आज काम अभी भी चल रहा है. ये तो 22 तारीख के चक्कर में अभी देने गाड़ी ये भिजवाई थी, बाकी आगे भी आएंगे. तो 22 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. आप पूरा ट्रक भर के यहाँ पर 20,000 कंगन लेकर आ चुके हैं और सारे जो लोग आए हैं उनको प्रसादी के तौर पे भी आप उनको देंगे? जी जी, नहीं, मंदिर प्रशासन देगा, हम मंदिर कमेटी को सौंप दिया है. मतलब 22 जनवरी को जो भी अंदर जाएगा उनको, और पूरे मतलब आप 20,000 लाए हैं तो जितने लोग आएंगे और जो ना भी आ पाए उनमें भी आप बांट रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay, so that essentially is, another part of the gift, in fact, that has been brought in from Firozabad. A glass bangle, which is the place that is famous for making glass bangles, gold-plated and embedded with the pictures of Ramayan, of Lord Ram, of Mata Sita. And that essentially is what we are seeing in form of gifts that are being brought in, boxes full of these bangles that have been brought in. Of course, the gifts pouring in from across the country here in Ayodhya, people gearing up for the 22nd of January. With video journalist Vipin Moria and Priyanka Sharma, reporting from Ayodhya for Republic. Main priest in fact is joining us right now, who will in fact carry out the Pran Prashishtha and the consecration ceremony that will carry out on 22nd of January. But उससे पहले भी कई सारी पूजा अर्चना हो रही है, कई सारे जो इसमें रिचुअल्स हो रहे हैं. कल रात में हमने देखा कि जो मूर्ति है उसको जो मंदिर के अंदर लेके जाया जा चुका है. इसके आगे क्या कुछ अब रिचुअल्स होने वाले हैं, क्या कुछ पूजा अर्चना होने वाली है? आज से प्रधान पूजा प्रारंभ हो चुकी है, मतलब होने वाली है 1:30 बजे. 1:28 का मुहूर्त है, हम लोग वहीं पर अब प्रस्थान कर रहे हैं. तो सभी कार्य की निर्विघ्नता के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गणेश पूजा का विधान है. तो ये करीब 1:30 बजे सभी पूरे भारतवर्ष से पधारे लोग जो हैं ये लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और गणेश अंबिका पूजन से इस कार्य का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा. आज जल यात्रा जिसे कहते हैं वो भी आज हो रही है, उसमें क्या कुछ होता है, उसमें क्या कुछ विधि विधान? जल यात्रा तो कल हो गई. कल हम लोग सरयू गए थे, वहाँ से सरयू नदी का जल वर्धिनी कलशों में 9 कलशों में भरकर ले आए हैं. आज जलाधिवास शब्द का जलाधिवास होना है. जलाधिवास में मूर्ति जो होती है उसका कई प्रकार से संस्कार किया जाता है. कभी जल में है, कभी अन्न में है, कभी फूलों में है, कभी फलों में है, कभी घी में है. तो ये सब प्रक्रिया आज से आरंभ होगी. उसमें सबसे पहले आज शाम को मूर्ति को जलाधिवास कराया जाएगा, मूर्ति को जल में बिठाया जाएगा. उसके बाद क्या कुछ होने वाला है 22 जनवरी तक, और आज अगर ये हो रहा है तो कल और परसों फिर क्या क्या विधि विधान? कल जो है भगवान अपने मंडप में अग्नि का प्रकट्य होगा, अग्नि प्रकट की जाएगी. वो अरणि मंथा एक विधि होती है, उससे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं और उस दिव्य अग्नि को जो है, जो 9 कुंड हमारे यहाँ बने हुए हैं, उन 9 कुंडों में वितरित किया जाएगा. और उसके बाद नवग्रहों की पूजा पहले होगी और नवग्रहों की आहुति, एक कुंड पर 4 ब्राह्मण बैठ करके नवग्रहों की शांति होगी. वहाँ से ये हवन कार्य कल से प्रारंभ होगा. उसमें प्रतिष्ठा का भी होम है, राम जी के नाम से भी आहुतियाँ पड़ेंगी. ये सब कार्य कल से प्रारंभ होगा. और आपको मैंने जैसे बताया 12 अधिवास हैं, कभी फूलों में, कभी ये सुबह शाम करके इसको डिवाइड करके हम लोग ये 21 तारीख तक करते रहेंगे.
और फिर एक दिन 21 तारीख को जो है भगवान का 96 कलशों से स्नान है। तो उन कलशों में आपने पता होगा कई तीर्थों के जल आए हुए हैं यहाँ पर। तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों के जल होंगे, वृक्षों के पत्ते होंगे, फूल होंगे और फल होंगे और नवरत्न पंचरत्न ये सब जो हैं, इन सबको डाल करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। तो उस स्नान के बाद भगवान जो है रात को 21 तारीख की रात को एक उनके लिए पलंग बनाया गया है, उसमें वो शयन करेंगे और फिर सुबह उठ करके प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जो परिक्रमा की बात की जा रही थी कि मूर्ति को परिक्रमा पहले कराई जाएगी, उसका क्या मान्यता है और कब वहाँ पे होगी, किस तरह से ये परिक्रमा की मान्यता यह है कि भगवान पूरे शहर को जहाँ जहाँ घूमेंगे सारे तीर्थों को देवालयों को भगवान देख लेते हैं। एक प्रकार से ये भावना है। जन सामान्य भी उस मूर्ति को देख लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ संभव नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से उस कार्यक्रम को मंदिर के अंदर ही कर लिया गया है, मतलब शास्त्र विधि भी हो जाए और उसका वो भी ना हो, तो वो कार्यक्रम हो गया है। तो कल शाम को ये कार्यक्रम हुआ था 4 बजे। मूर्ति को पालकी में रख करके एक सुंदर पालकी बनाई गई थी और वो पूरे मंदिर के चारों तरफ उसकी एक परिक्रमा करवाई गई। तो ये कार्य कल संपन्न हो चुका है। गर्भगृह में मूर्ति को अब रख दिया गया है और उसको जो आंख पे पट्टी बांधी होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए कि अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, कब खोली जाएगी, किस तरह से खोली जाएगी? ये पट्टी बांधी गई है, ये जिस दिन शाम को 96 कलशों से अभिषेक होगा भगवान का, उसी दिन ये मूर्ति शास्त्र के दृष्टिकोण से ये पट्टी खोली जाती है। लेकिन यहाँ भगवान का जो प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है 22 तारीख को है, तो मुझे लगता है सर्वसामान्य को वो दृश्य देखने को मिलेगा। 22 तारीख को ही भगवान का नेत्र, मतलब सभी लोग पर्दा खुलेगा और सब लोग पहली बार जब देखेंगे भगवान को, तो वो 22 तारीख को ही, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो जो विधि होगी उस दिन प्रतिष्ठा की विधि होगी, उसी समय देखने को मिलेगा। वो आईना दिखाएंगे उस जी। और अभी गर्भगृह में मूर्ति रख दी जा चुकी है, परिक्रमा वगैरह अंदर हो चुकी जी, ये सब कार्यक्रम अंदर हो चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। Viewers, much for coming up. PM Modi releases Ram Janmabhoomi stamps, says postal stamps will enlighten younger generations. Stay tuned. अच्छा राम में हो रखा है, राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण जय श्री राम, नारायण नारायण जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान।
So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya. And right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the Dhoop Batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the dust. The US and British military forces are conducting airstrikes in Houthi-controlled regions of Yemen, targeting cities such as Hodeidah and other cities. The US and UK airstrikes have been launched on urban areas in Yemen. Houthi rebels in Yemen launched missile drones targeting a US-owned vessel in the Gulf of Aden. The Houthis confirmed that they launched the attack in response to earlier military actions by the United States and the United Kingdom. The United States has relisted Yemen's Houthi rebels as a global terrorist group in response to their relentless attacks on commercial ships in the Red Sea and Gulf of Aden. The State Department said that the designation aimed at blocking money and weapons from going to the Iran-backed terrorists. Today, the Secretary of State announced the designation of the Houthis as a specially designated global terrorist, effective February 16th for threatening the security of the United States. Since November, the Houthis have launched numerous missiles and drones towards international merchant ships, as well as U.S. and partner naval vessels defending the safety and security of commercial shipping across the Red Sea. These attacks against international shipping have endangered mariners and disrupted the free flow of commerce and freedom of navigation. For the past several weeks, the United States, with allies and partners around the world, has made clear that there must be consequences for those attacks. And today's designation follows on our military action last week to hold the Houthis accountable for their actions. Pentagon officials maintain that the U.S. military strikes against Houthis' military sites were effective. Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder said that these strikes focused on the Houthis' command structure. We are going to continue to work with our partners in the region to prevent those attacks or deter those attacks in the future. And we're also going to continue to work very hard to prevent the Israel-Hamas conflict from escalating into a broader regional conflict. In our assessment, we hit what we intended to hit with good effects. Again, the objective here was to disrupt and degrade Houthi capabilities to conduct attacks. Investigating an attack on the set of public television channel last week was shot to death. The prosecutor who had carried out other high-profile investigations in the past was shot while driving a vehicle. South Korea and U.S. nuclear envoys met to discuss high tension in the Korean peninsula and ways to respond to North Korea's nuclear threats. The two are scheduled to meet with Japan's nuclear envoy later in the day. Much more coming up. U.S. high drama in Chandigarh polls as Aam Aadmi Party Congress councillors protest outside the Municipal Corporation office. Stay tuned. Well, ahead of the Pran Prashishtha of Ram Mandir in Ayodhya, well, now we see that people from various walks of life across the country are reaching Ayodhya. And right now, as we are reporting from Hyderabad, well, behind me is 1265 kgs of laddu, which is being made here by one of the catering services. And also, remember, this is now being taken to Ayodhya and also will be reaching Ayodhya on
the 21st, but also at the same time a very special laddu which is made here by the Shri Ram caterers. Well, they also say that they have been waiting for this day, and that is the reason they have requested the trustees of Ayodhya Ram Mandir to give them permission. And as you can see, this very special laddu which is made here with 1265 kgs of laddu will be now reaching Hyderabad, will be reaching Ayodhya very soon. And also at the same time, as you can see, all the arrangements have been put in place here. As you can see, there's an AC, there's fan also which is put in place so that this laddu doesn't get spoiled and can be distributed to the people who visit Ayodhya Ram Temple. A very special 1265 kgs of laddu will be soon reaching Ayodhya from Hyderabad, and also a strong message being put in place by the people of Hyderabad that they also are giving their contribution. As you can see, ahead of the Pran Prashishtha, we will be seeing this big laddu, 1265 kgs of laddu prasad, which will be distributed in Ayodhya. And also it took near about 3 days to make this laddu and also make sure that all the ingredients are put in place, and later by all the ingredients put in place, and now we see that this laddu is all ready and now will be taken to Ayodhya. A Shobha Yatra will be taken out from Hyderabad and will be reaching Ayodhya ahead of the Pran Prashishtha. This is Aniri Shah with Video Journalist for Republic TV. Hello and welcome viewers, I'm Priyanka Sharma. Welcome to a very special broadcast that we are bringing to you from the ground here in Ayodhya, where the entire city is making celebrations, in fact, and gearing up for the 22nd of January. We'll take you through all that is happening in Ayodhya and all that is planned till the consecration ceremony takes place. First up, the headlines. Prime Minister Modi releases Ram Janmabhoomi stamps, says postal stamps will enlighten younger generation. Lord Ram's idol have been placed in Ayodhya Temple to be moved to Sanctum Sanctorum today. Delhi Chief Minister summoned by the Enforcement Directorate today in the Delhi liquor policy case. Punjab Chief Minister Mant says Aam Aadmi Party will contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Navneet Bittu says no India alliance in Punjab. High drama in Chandigarh polls as Aam Aadmi Party Congress councillors protest outside the Municipal Corporation office. UP Chief Minister Yogi Adityanath to hold the cabinet meet today, says days after, ahead in fact of the grand consecration ceremony at Ayodhya. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Shravan, has been arrested by the Enforcement Directorate in BMC Khichdi COVID scam case.
First up, viewers, right away we are getting some breaking updates as far as MK Stalin's son Udayanidhi Stalin is concerned, who stirred up a fresh controversy regarding the Ram Mandir once again, making a comment about the demolition of the mosque. Now, Udayanidhi expressed his disapproval, stating that he is not okay with the idea of demolishing a mosque to construct a temple, linking it to the construction of the Ram Temple. Now, once again, viewers, we're looking at the politicization of the consecration ceremony and the Ram Temple, for which the entire nation is in fact celebrating and waiting for. Once again, we're looking at Udayanidhi Stalin, who's always been in the news for all the wrong reasons, for making several statements against the sentiments of the Hindu religion. Once again, making another statement about the Ram Temple, stating that he is not approving, in fact, of the temple being constructed after demolishing a mosque. Let's listen in as to what he had to say. ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது. அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசூதியை இடிச்சிட்டு அங்கே கோயில் கட்டினது தான் எங்களுக்கு அந்த உடன்பாடு கிடையாது. நம்முடைய பொருளாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் ஒன்றாக்காதீங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். கலைஞர் ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது. அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசூதியை இடிச்சிட்டு அங்கே கோயில் கட்டினது தான் எங்களுக்கு அந்த உடன்பாடு கிடையாது. நம்முடைய பொருளாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் ஒன்றாக்காதீங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். கலைஞர் ஏற்கனவே சொன்னார், எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவங்க கிடையாது. அங்கே கோயில் வர்றது எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மசூதியை இடிச்சிட்டு அங்கே கோயில் கட்டினது தான் எங்களுக்கு அந்த உடன்பாடு கிடையாது. நம்முடைய பொருளாளர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆன்மீகத்தையும் அரசியலையும் ஒன்றாக்காதீங்கன்னு தான் சொல்கிறோம். So once again, viewers, we are looking in as to how Udayanidhi Stalin has made those statements against the Ram Temple and has said that he does not approve of a temple being made in after a mosque has been demolished. In fact, our correspondent Varshini is also joining us on the phone line here. Varshini, take us through the details of what he has to say. Udayanidhi Stalin has always been in the news for making anti-religious statements as well. Speak to us about the latest controversy about his statements about the Ram Mandir. Well, Priyanka, if you see today when he spoke to the media about the Ram Mandir inauguration, when a question was asked to him about the inauguration and what DMK stand is on it, he essentially stated that the DMK is not very okay with this very fact that a mosque was demolished initially and a Ram temple is being built on that particular location. He in fact also quoted his grandfather, the former Chief Minister of Tamil Nadu, M. Karunanidhi, and he said that Kalaignar has always spoken about how the DMK party is not against any religion, but only it's on any religious belief. Only a mosque being demolished and a temple being constructed on that very particular place is what is they are not very comfortable with, is what he essentially stated. And a few days ago, the treasurer of the party, MP T.R. Balu, had also released a statement where he mentioned about how the Bharatiya Janata Party is trying to do politics with this, and religion and politics are two separate things, and the BJP is bringing this together to confuse the people, is what his statement was essentially all about. Therefore, Udayanidhi Stalin also quoted that particular statement of the treasurer of the party, MP T.R. Balu, statement, and he said that politics and religion should be kept aside and it should not be brought together. Therefore, this only enhances the point of the DMK party, the DMK government in Tamil Nadu. There's a statement here that they are not, with the Ram Temple inauguration. They're not with the country at this particular here on the broadcast and breaking down the details of that very crucial statement, in fact, coming in from Udayanidhi Stalin. And viewers, as we are tracking for you the statements coming to light from the opposition parties, we are looking at the BJP hitting back against the Indie bloc, stating that this is not a BJP event as they are calling it. In fact, this is an event for everyone, all of the people of faith, in fact, who have been waiting for so many years for the Ram Temple to be constructed. In fact, in an exclusive conversation with Republic, UP's Tourism Minister Jaivir Singh, in fact, had also made several statements and lashed out against the opposition parties. Let's listen in.
जयवीर सिंह जी इज जॉइनिंग अस राइट नाउ। सर, स्ट्रेट अवे आपसे हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है, पहले तो उसके ऊपर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ हम देख रहे हैं माहौल बना हुआ है अयोध्या में, और क्या कुछ इससे डेवलपमेंट भी होगा अयोध्या के? अगर हम पूरे अयोध्या की बात करें तो काफ़ी सारे मास्टर प्लान वगैरह भी बने हुए हैं, क्या हम देख रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा इरादा है इसका? देखिए, पहले तो देश और दुनिया के रहने वाले सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही भव्य दिव्य अलौकिक अवसर है, अभूतपूर्व अवसर है, जब 500 वर्षों से ज़्यादा समय के लंबे अंतराल के त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्षों के बाद वो क्षण आया है कि 22 तारीख को, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 22 तारीख को राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के कर कमलों से संपन्न होगा। और इस क्षण का इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन संस्कृति के लोग कर रहे हैं। इस पर पूरी देश और दुनिया के उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है कि वो आएँ और इससे अलौकिक क्षण का आनंद लें, जुड़ें, साक्षी बने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ भी हैं, क्योंकि सारे कार्यक्रम लाइव रहेंगे तो वहाँ सब लोग। तो वो किसी एक या दो लोगों की वजह से नहीं मिलता, उनके प्रिंसिपल ने, उनके टीचर्स ने, उनके वाइस प्रिंसिपल ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर मेहनत की होती है, तभी स्कूल चमकता है। तो मैं उन सभी स्कूलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सभी बच्चों को आज बधाई देना चाहता हूं जितने सारे बच्चों को आज अवार्ड्स मिले, टॉपर्स को अवार्ड्स मिले। उन सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वो जिंदगी में खूब तरक्की करें और जो सपने उन लोगों ने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे हों और वो भारत की खूब सेवा करें, लोगों की खूब सेवा करें अपनी जिंदगी के अंदर। हर बच्चा भगवान की देन है, हर बच्चे की अपनी जिंदगी होती है, हर बच्चे की अपनी यात्रा होती है। कुछ बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आज अवार्ड मिले, इसका मतलब यह नहीं कि जिन बच्चों को आज अवार्ड नहीं मिले वो उन बच्चों से किसी भी हालत में कम है या किसी। हर बच्चे को भगवान ने किसी ना किसी कुछ ना कुछ दे के भेजा है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई कला में अच्छा होता है, कोई किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है हर बच्चे में। भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है। हमारे स्कूलों का और शिक्षा प्रणाली का ये फर्ज है कि हर बच्चे को अपनी क्षमता पूरी तरह से वो अचीव कर पाए, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज उसको प्रदान करना। और इसी दिशा के अंदर आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहती है। हर स्कूल के अंदर हमने किस्म किस्म की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आर्ट। Now viewers, that was Arvind Kejriwal, but we move on to another big story that we are tracking for you as far as Chandigarh polls are concerned, where the Aam Aadmi Party and the Congress councillors had been trying to protest. In fact, there was a lot of turmoil right outside the municipal office as well, as they tried to get entry into the office even after the police had refused them. Let's take a look at this report as to understand what's happening in Chandigarh. Well, you can see that now the Congress councillors are here, and in fact they are walking towards in a form of protest. High drama witnessed. आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? वोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपको रोक रही है क्या? पुलिस वाले रोक रहे हैं हमें। क्यों रोक रहे हैं? क्यों काउंसलर्स तो अलाउड है? नहीं दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे। So here you can see that high drama has been witnessed outside the MC office again. Congress and Aam Aadmi Party councillors have came here together, and they are trying to enter, but the police is stopping them. अब पुलिस खुद लगी हुई है। प्रेसिडिंग ऑफिसर कोई बात नहीं, प्रेसिडिंग ऑफिसर कोई भी बन सकता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर अंदर कोई भी बन सकता है। Now the police is trying to maintain the law and order situation, and in fact the police is trying to block, and the presiding officer has not reached here so far.
one by one. The police is trying to control the situation with the heavy deployment of the barricades. So Congress and AAP councillors wanted to enter inside. So all the councillors are blaming the BJP to hatch a conspiracy against the India Alliance, Congress and AAP for the mayor election. So this is all happening outside the MC office in Chandigarh for the polls of mayor. With camera person Kishan Kumar, this is Amandeep Dixit for Republic Media Network. All right, time now for some news in brief. Prime Minister Narendra Modi releases commemorative postage stamps on Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps on the Lord Ram around the world. There are 6 stamps which include Ram Temple, Lord Ganesh, Lord Hanuman, Jatayu, Kevetraj and Ma Shabri. The 5 physical elements known as the Panchbhutas are reflected through the various design elements. Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar, during his meet with the media, stated artificial intelligence may result in old, dull tasks getting abolished. He further ensured that new jobs will be created. The Supreme Court has agreed to hear applications filed by 3 of the convicts in Bilkis Bano case seeking an extension of the time to surrender. The Supreme Court on January 8th cancelled the release given to 11 prematurely acquitted convicts and issued orders to surrender in jail within 2 weeks. Enforcement Directorate conducted raids at 7 places in Kolkata in connection with the probe in alleged irregularities in the recruitment of the schools in West Bengal. A senior officer stated that raids are being held at the residences and the offices of those who allegedly acted as middlemen in the scandal. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia unveils Air India Express Airbus A350 at the Wings India event in Hyderabad. Gurudev, are the Muslims a part of this celebration? We are just days away from the Pran Prashishtha of the Bhavya Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality? What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram Temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3, everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements.
पर हर तरफ अक्षर राम में हो रखा है। राम धुन जो है वो गूंज रही है और वही राम धुन जो है, राम का नाम यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। एक बार और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो महसूस कर सके, हर कोई आ नहीं सकता लेकिन कम से कम रिपब्लिक भारत देखकर महसूस तो कर सके कि यहाँ पर क्या हर्षोल्लास का समय है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण, जय श्री राम, नारायण नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। अंजनीच्या सूता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। So you can see as the day of the consecration ceremony approaches, the preparation is underway here in Ayodhya, and in fact the Havan Samagri and everything that is needed for the consecration ceremony is starting to pour in Ayodhya. And right behind me is another such team that has come from Mathura, in fact, who have gotten the dhoop batti along with the things that are going to be used in the consecration ceremony as a part of the Havan Samagri. You can see a picture of Lord Ram adorned with the the dozens of flowers along with the dhoop batti that has also been brought in. Let's get in a word from the people from Mathura who have come in here to understand how they are preparing for the 22nd of January as well. हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे मथुरा से आए हैं, आप सब लोग आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान राम के लिए 22 जनवरी के लिए, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? हम लोग बहुत Welcome back, viewers. We are keeping you ahead on all that is happening in Ayodhya. The mood is set, the stage is set. You know, we'd like to pan our cameras and show our viewers to understand the sense of how the celebratory mood, in fact, is here in Ayodhya. Hundreds of people, hundreds of devotees are pouring into Ayodhya. In fact, they are trying to soak in all that is happening in Ayodhya because, of course, perhaps a day from now, they will not be allowed to go inside as well, come inside the city. But, of course, we are bringing you each and every update. Time now for news in brief as to what's happening in Ayodhya. Let's take a look. Aam Aadmi Party Gujarat Chief Ishadan Gadvi stated that Aam Aadmi Party's Gujarat unit has decided to organize a 3-day Ram Mandir Pran Prashishtha Mahotsav. They are also planning to organize Sundarkand paths in all districts of the state. Perfume brand Bareli's businessmen prepare special perfume and kesar dhoop dedicated to Shri Ram Mandir Pran Prashishtha ceremony in Ayodhya. Indian Meteorological Department launched a new page for Ayodhya weather forecast. The page is for ease and convenience of the people visiting Ram Mandir. Karnataka Congress stated that he is an Indian and so worshipping God is a personal opinion. Religion is not an issue for the people in Karnataka. He also stated that there is no need for permission from the Congress to visit the Mandir. Shri Padmanabhaswamy Temple in Kerala will be gifting an Onavilu, which is a ceremonial bow, today in a function as a part of the consecration ceremony in Ayodhya. AI may result in certain old dull repetitive tasks
getting abolished, and new jobs will get created. In looking after AI itself, AI requires a lot of technology, machines, hyper computing. So all that will create new jobs, new specializations. So retooling of people, reskilling, all that will happen. We have a Center for Excellence for Big Data Analytics at one of our establishments. We also set up an incubation center called INICAI, Indian Navy AI Incubation Center, which is at Bangalore, since that is the hub of IT as well. They're doing good work, more than 30 projects based upon use cases for the Navy, for operational, largely for operational requirements, and then for logistics, administrative, maintenance tasks as well. So more than 30 plus cases are already being worked upon by them. And we also have the IDEX and the NIIO, the Navy Innovation and Indigenization Organization. So under the scheme as well, we have given under the IDEX about 14 contracts have been signed with various startups on AI projects, and we feel some of them may be first globally as well. And this has been a result of the Swavalambhan seminars which we had. We had one in 22, and we had the second edition in 2023 October. So various challenges were given, industry responded with it, startups, etc., and now we're taking it forward. That we have planned for you from the ground here in Ayodhya, but stay tuned to Republic as we have the largest team of reporters here in Ayodhya, keeping you ahead on each and every update that's happening as the run-up to the consecration ceremony. Time now for a short break. We'll be back with all that's happening in Ayodhya. Constantly we are told that religion is for the home. Don't be religious outside the home. What is the need to show your religion in the form of temples or collective prayer? Is this truly secularism, or is this a confused approach? Every tradition is unique in itself, and we must respect that. So hundreds of Muslims are taking part in this celebration. There were Sufi Muslims who came and presented me Tulsi Ramayana. During the mediation time, they brought Quran, also Tulsi Ramayana. They knew Chaupai so well in Ayodhya. Wow. So what I'm saying is that people have that respect, yes, and have their traditions. That should be respected and maintained intact. कहाँ हो तुम किम? कैसी लगी हमारी एंट्री? अल्टीमेट। स्विच। कुर्सी की पेटी बंदी है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। और अब क्लाइमैक्स। The new Hyundai Creta. Undisputed. Ultimate. देख, इत्तू सी है। थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इत्तू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। वर्ष 2020 से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई गरीब अब भूखा नहीं रहेगा। अब अगले 5 वर्षों यानी 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से हर लाभार्थी को मिलेगा मुफ्त राशन। मुसीबतों की छुट्टी झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा है जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार का भगवंत मान जी का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली के बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा 0 आ रहा मेरा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। मेरे ते यकीन तुसी कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। Getting you the latest which is coming in right now, and we are counting down to the Ram Mandir inauguration. We have a team of reporters on ground. We have Priyanka, we have Rakshita, our team which is getting you all the details from Ayodhya as the Ram Mandir inauguration is just a few days away. We'll get to you all the top details, but first the headlines we are tracking at this moment. Prime Minister Modi releases Ram Janmabhoomi stamp, says postal stamps would enlighten younger generation. Lord Ram's idol has been placed in the Ayodhya Temple to be moved to Sanctum Sanctorum today. Delhi Chief Minister summoned by the ED today in the Delhi liquor policy case. Punjab CM Man says Aam Aadmi Party will contest all 13 seats in Punjab, while Congress's Ravneet Bittu says no India alliance in Punjab. High drama in Chandigarh polls as Aam Aadmi Party Congress councillors protest outside Municipal Corporation office. UP CM Yogi Adityanath to hold cabinet meet today as just days ahead of the grand consecration ceremony at Ayodhya. Close aide of Aditya Thackeray, Suraj Chavan, has now been arrested by the Enforcement Directorate in BMC Khichdi COVID scam case.
Viewers, not too many days are left for the great and grand Ram Mandir inauguration. Just 4 days are left to go for the mega Ram Mandir Pran Prashishtha. Ayodhya is all decked up. Prime Minister has unveiled Lord Ram stamps. The BJP, on the other hand, has released a song. India is awaiting the big moment with much anticipation. And with the largest team of reporters, Republic is leading the coverage as the nation gears up for the biggest moment in India's civilization history. And that is a big update coming in right now, viewers. As we keep getting you more updates, the Prime Minister has released a commemorative postage stamps on Shri Ram Janmabhoomi Mandir and a book of stamps issued on Bhagwan Ram around the world. Let's go ahead, viewers, to my colleague Priyanka, who has been getting us all the reports from Ayodhya and getting us what is happening on ground zero. Take a look at this. From across the country, there are gifts and offerings that are pouring in to Ayodhya, and people are in fact making and crossing a journey of 1,000 kilometers to come to Ayodhya with their offerings and their gifts. One such gentleman, in fact, is joining us right now from Firozabad, who have brought bangles that have been plated with golds and also the images of Lord Ram and Sita that have been embedded in these bangles as well. So these are the special bangles, in fact, that have been brought in. Of course, a very special part of it is that these are around 20,000 bangles that have been brought in, especially for the Pran Prashishtha, for the consecration ceremony, and for essentially to be given to the devotees on the 22nd of January as well. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. आप फिरोजाबाद से आए हैं, पूरा ट्रक भर के मैं देख रही हूँ कि ये चूड़ियाँ लेकर आप आए हैं. कितनी चूड़ियाँ यहाँ पर लेकर आए? ये 20,000 कंगन है. 2 कंगन का एक पैकेट है. ऐसे 10,000 पैकेट लाए जी. 10,000 पैकेट आप लेकर आए हैं और 22 जनवरी को देने के लिए आए. जी जी जी. श्रद्धालुओं को कमेटी बांटेगी और ये विशेष तौर से बनाए गए हैं. ये एक तो बगैर जॉइंट का है और ये गोल्ड प्लेटेड इसमें है, गोल्ड लगा हुआ है. और ये विशेष बात इसमें ये है, हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों कारीगरों ने मिलकर. कितने दिन लगे आपको ये 20,000 कंगन इकट्ठा करने में, बनाने में? 6 महीने से लगातार कार्य चल रहा है. प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई थी, उसी दिन से शुरुआत हो गई थी इस काम की और आज आपके सामने है और बरकरार आज काम अभी भी चल रहा है. ये तो 22 तारीख के चक्कर में अभी देने गाड़ी ये भिजवाई थी, बाकी आगे भी आएंगे. तो 22 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. आप पूरा ट्रक भर के यहाँ पर 20,000 कंगन लेकर आ चुके हैं और सारे जो लोग आए हैं उनको प्रसादी के तौर पे भी आप उनको देंगे? जी जी. नहीं, मंदिर प्रशासन देगा, हम मंदिर कमेटी को सौंप दिया है. मतलब 22 जनवरी को जो भी अंदर जाएगा उनको, और पूरे मतलब आप 20,000 लाए हैं तो जितने लोग आएंगे और जो ना भी आ पाए उनमें भी आप बांट रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Okay, so that essentially is, another part of the gift, in fact, that has been brought in from Firozabad. A glass bangle, which is the place that is famous for making glass bangles, gold-plated and embedded with the pictures of Ramayan, of Lord Ram, of Mata Sita. And that essentially is what we are seeing in form of gifts that are being brought in, boxes full of these bangles that have been brought in. Of course, gifts pouring in from across the country here in Ayodhya. People gearing up for the 22nd of January. With video journalist Vipin Moria and Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic. All right, viewers, let's go straight to my colleague Priyanka, who has been in Ayodhya for the past few days. Priyanka, I'm coming to you right now, and this is a very, very special day, day 4 of consecration ceremony. The entire India immersed in, spiritual excitement as we count down to the Ram Mandir inauguration, Jan 22nd. What is happening? We can see a lot of people behind you, a lot of activity. Well, that's essentially what sums it up, Shivangi, because, we are looking at so many people who are gathering here, so many people who are, in fact, in a celebratory mood. They are gearing up for the 22nd of January. They are, in fact, treating it truly as the second Diwali, as it was called by the Prime Minister as well. They've taken that statement to heart and they are, in fact, celebrating just that way. In fact, joining me right now are some of the ladies who have, in fact, come up here as well. They are also in a celebratory mood. आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है? 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है? हम द्वारका से आए, गुजरात से, और इधर अयोध्या में आके बहुत अच्छा लगता है. जैसे आज दिवाली हो, ऐसा त्यौहार जैसा लगता है कि हमारे भारत में आज कुछ त्यौहार है, ऐसा लगता है और बहुत अच्छा लगता है. और इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाने पीने का, रहने का अच्छा सुविधा है और बहुत बढ़िया लगता है आज. और
बस जय राम जी की। 22 का उत्सुकता से इंतजार है, 22 के लिए इंतजार बिल्कुल है कि राम मंदिर बन रहा है इतने सालों बाद। 550 वर्ष के बाद ये मंदिर बन रहा है और हमको ऐसा लगता है कि बहुत खुशी का माहौल है। हमारा इंतजार आज ऐसा लगता है खत्म हो गया है। आप बताइए मैम, आप भी काफी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी काफी खुश लग रहे हैं, यहाँ पर एकदम जश्न का माहौल लग रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। कितने वर्षों की बात जो है ये दिन हम लोग के लिए आए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि मैंने बयान नहीं कर सकते। गर्व की बात है, हम अयोध्या से हैं, हमें ये गर्व होता है कि हम अयोध्या से हैं। और अभी हम लोग नया घाट से रामपेड़ी से आ रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने मिलकर दूरदुरिया की पूजा की है 5100 महिलाएं मिलकर, जिसमें जो कि हमारे यहाँ ये परंपरा है उत्तर प्रदेश की। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है सबसे पहले औसाना माता की पूजा होती है, जिसे हम दूरदुरिया भी कहते हैं। चाहे वो शादी हो या विवाह हो, कुछ भी हो, उसके पहले भी किया जाता है, बाद में भी किया जाता है। आज हम लोग रामोत्सव के उपलक्ष्य में दूरदुरिया की पूजा किए हैं, जिससे हमारे तो पूजा अर्चना हर बार चल रही है, हर दिन कुछ ना कुछ यज्ञ जरूर हो रहा है कि यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, पूजाएं की जा रही हैं, क्योंकि 22 के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई वेट कर रहा है। सो दैट एसेंशियली इज व्हाट द मूड इज। विल ट्राई टू मेक आवर वे टुवर्ड्स मोर पीपल एज वेल। आप बताइए, आप भी यहाँ से हैं, क्या कुछ यहाँ पर माहौल आपको दिख रहा है 22 जनवरी? बढ़िया दिख रहा है, आनंद है। और मैं तो स्वयं अयोध्या का जन्मा हूँ, अयोध्या में रहता हूँ। मेरी उम्र 58-59 साल हो चुकी है, लेकिन मैंने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी 40-45 साल में। सारा मीडिया भारत का, शायद बाहर का भी यहाँ आ चुका है। तो ये तो उत्सव है और ये भाव की नगरी है, सब भाव में मस्त हैं। वो बहुत हैं जो लोग कमरे में रहते थे सेलिब्रिटी, वो भी कल आ रहे हैं। बच्चन साहब और कौन साहब, कलेमा मालिन आई थी, है ना। ये सब तो नेता से बड़े अभिनेता होते हैं, इनको देखने के लिए लोग आतुर हैं। और सारे बाबा और चाहे गृहस्थ हो, सब यहाँ बिल्कुल मजे से बस्ती में है। और भगवान राम 500 साल के बाद आ रहे हैं। पूरा मैं तो यही कहूँगा, बिना मेहनत के बीजेपी सरकार आ जाएगी। आप इतने साल यहाँ पर बिताए हैं अपने अयोध्या में, कभी ऐसा माहौल देखने को मिला था? क्योंकि इतने टाइम बाद अब मंदिर बन रहा है। नहीं, दुख का समय देखना पड़ा। ये 90 और 92 का समय देखना पड़ा, आवाज हर्ष का समय देख रहा हूँ। बिल्कुल। So essentially that is the mood here of the people. But viewers, we're also getting in a very important press conference of Gaurav Bhatia on Arvind Kejriwal skipping his summons. Let's listen it. चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है, आप सब पत्रकार बंधुओं को ज्यादा जानकारी होगी। एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे। टॉयलेट को क्लासरूम बता दूंगा मैं, दिल्ली के लिए बस खरीदूंगा, उसमें मैं घोटाला कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा, घोटाला कर दूंगा। और अब शराब घोटाले के किंगपिन हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके ईडी के प्रश्नों का सामना कर सको। कुछ प्रमुख बातें इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं।
अराजकता का पर्याय कोई है, जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां पे भी जो उनके शराब कारोबारी घोटालेबाजों के साथ बैठ के ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, बताएं। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को, आपको जांच एजेंसी के सामने जाना था। करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत चुका है। ये जो लंबे लंबे पत्र आप जांच एजेंसी को लिखते हैं, उसकी बजाय आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कोर्ट जाके सारे साक्ष्य दलील अपनी रख दें? और मैं पुनः कहूंगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। लेकिन अब यह यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने ये जो घोटाला किया है हजारों करोड़ रुपए का, जैसे 10.5 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, संजय सिंह 3.5 महीने से बेल नहीं पाए, अंदर है, तो अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। जनता को जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कह दे, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी, आपके कन्वीनर सुन लो, कानून से ऊपर तुम हो नहीं। और जैसे किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए जमीन पर कदम रखने ही पड़ते हैं, इसी तरह से यह बात जान लो, जो भी मुजरिम हो, जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है, वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता है। बचने वाले नहीं हो आप अरविंद केजरीवाल। ये जो सरकार है, ये आज पर्याय है ईमानदारी की। ये पर्याय है कि अगर घोटाला करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैंने तमाम उनके वक्तव्य देखे, अभी भी चल रहा था। मैं केवल याद दिला दूं भारतीय राजनीति के गजनी को, जिनकी याददाश्त चली गई, कि ये आपका वक्तव्य है अरविंद केजरीवाल जी कि मैं भारतीय राजनीति में कदम इसलिए रख रहा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और फिर से याद दिला दूं आपको कि आप ही ने कहा था, किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का पर्याय है, और जो गंदगी उन्होंने मचाई है, जो उदाहरण उन्होंने जनता के बीच में पेश किया है, यह चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान को तार-तार कर रहा है और अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। ये बचने नहीं पाएंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो? All right, viewers. So there we are seeing that there's a BJP press conference where important points have been made by the BJP, where the main focus would be the summons sent to Kejriwal. Remember that Kejriwal has many times skipped those summons, and the BJP has alleged that Kejriwal
does not want to appear before the ED, and he's running away and escaping from the ED summons. In fact, let's go ahead and play out exactly what Arvind Kejriwal has said. He has now claimed political vendetta, saying that the summons are nothing but a bid to arrest by the BJP. उनकी नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई नहीं, ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है। और but we're keeping you ahead on all that's happening in Ayodhya. A lot of action, so much preparation, and the celebration that is going on with the people in Ayodhya. We'll be back after a very short break. Don't go anywhere. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. In shadows of light, driving into the wild. Surprise. Kia, movement that inspires. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू, कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। बिजली दे बिल तो जमा ही मैनू 1.5 साल हो गया, जमा जीरो आ रहा मेरा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। Eat it on time and please ride the bike slowly. Okay.
And this is for your safety. Arey, I almost forgot. LIC. This is for our safety. दिल की सुनो. LIC चुनो. LIC हर पल आपके साथ. भाई इतनी बड़ी टाइल. इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं. टाइल्स तो बड़े होने चाहिए. सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई. सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े. Viewers, only 4 days left to go for the mega Ram Mandir Pran Prashishtha. Ayodhya is all decked up. Prime Minister has unveiled Lord Ram stabs. The BJP has, on the other hand, released a song. And India is waiting for that big moment. We have the largest team of reporters. And Republic is leading the coverage as the nation gears up for the biggest moment in India in the recent past. Let's go to Rakshita. Rakshita joining us live. Rakshita, I'm coming to you right now, and take us through the excitement that you see around you, Rakshita. This is a very big moment that we have been waiting for on Republic for the past year or so. We have been covering every detail as we inch towards the Ram Mandir inauguration. Well, of course, Shivangi, it's an absolutely Rammay atmosphere. It is electrifying. We see the young and old, everybody is excited. And as behind me, you can see, in fact, many performances happening. There are, students, there are young kids who are actually very excited. आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग बहुत देर से यहाँ पर हमें डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं परफॉर्मेंस है आपकी? नहीं, बस हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट करने आए हैं। हम लोग का चैनल है यूट्यूब पे, हम लोग के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और वही वीडियो शूट करने आए थे हम लोग यहाँ पे। आज काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे, समय नहीं हो पा रहा था, आज समय मिला है शूट करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ये म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा लाउड है, तो हम लोग का म्यूज़िक सिस्टम बहुत स्लो है। जो लेके आए थे म्यूज़िक सिस्टम वो हम लोग का ऑटो में खो गया है, तो भी उम्मीद करिए कि मिल जाए हम लोग का म्यूज़िक। कब से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस डांस की? हम लोग अभी आधे 1 घंटे हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तैयारियां इसकी कब से चल रही है? तैयारी आज ही हम लोग तैयारी करके शूट कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो रोज़ घूमते रहते हैं, हम लोग का घर यहीं पे है। हम लोग इधर रहते हैं नाकाचुंगी के पास, और ये तो 5 किलोमीटर दूर पे है जी। तो ये सब मतलब स्कूल में पढ़ते हैं? और ये हाँ, स्कूल तो है, लेकिन हमारी डांस क्लास है, तो क्लास में सीखते हैं, हमारी स्टूडेंट है सब। ये हमारे कैमरामैन हैं, बाकी हम कोरियोग्राफर हैं, बाकी हम भी शूट करते हैं, हम भी करते हैं। थोड़ा दिखाइए ज़रा डांसेस को स्टेप्स करके। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, एज यू कैन सी शिवांगी, इन फैक्ट द यंग students are also very excited, and we see they are recording a video, recording a dance performance. And since there are a lot of functions that are taking place around us, many events are happening, puja is also happening, bhajans are on the loudspeaker, as you can hear in the background. So in fact they're also unable to really it's a very, very modest equipment. They're just they just have a mobile phone for sounds and music just to record what they want to do. And this is of course on a bhajan that they are performing right now. You can see the little girl in the front also, and they have been rehearsing for some time, and we were actually noticing them. And just on the banks of Saryu, it's a beautiful sight. It's all color around. It's saffron and it's kesaria color, and there are garlands, there are Jai Shri Ram flags around us. And it's a beautiful sight that we are seeing right now in Ram Ki Paidi, where we are right now. It's a very pious and important religious site. Viewers, we will get you more coverage from Ground Zero in Ayodhya as me and my colleague Priyanka continue to bring you the latest inputs from Ground Zero. But right now, time for a very, very short break. We'll be right back. Stay tuned. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी?
सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए। और हमारे जवानों के कदम कभी ना रुके, सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर मेंबरशिप होगा, पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा मुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब it lets me carry forward my unutilized base coverage to the next year। कि मुझे भी चाहिए। जिंदगी को क्लेम कर ले। I did something called Pirate Radio, and I remember the craziest thing happened. One day, this RJ Mihir tagged Imran Khan, the actor, saying, if you like English music, you love Malini's nighttime show, and he tagged me. And at that point, my name was Miss Malini because of the blog. This is before the empire, okay? And I said as a joke, haha, Imran Khan would love for you to come host the show with me. And look at the power of social media. Imran Khan replied to that tweet, which is like 140 characters, saying, I'll do it on one condition. If we call it Pirate Radio, and I can play what I want. And I remember staring at my screen, thinking, did he just reply to me? I know that rush of a celebrity replying then, and I was like, I'll do whatever. I didn't even ask the program director. I said, done. Catch Techno Phantom B Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. Part of this celebration, we are just days away from the Pran Prashishtha of the Ayodhya Ram Mandir. Have Muslims actually accepted the reality? What is your sense of the Muslim community? Are they truly part of this celebration, or is there a feeling of angst inside them about the Ram Temple? As far as I know, today there is very good feelings even among the Muslims. I don't see there is any such bickering. When I went and met about 1,200 imams and other religious leaders throughout the country during the mediation time, I tell you, except 2 or 3, everyone was willing to be part of it. Everyone was willing for a peaceful and happy settlement. Nobody wants to carry this on further anymore. And many of them have written, they're given in writing that they are ready to be part of peaceful settlement. Yeah. Viewers, we love a breaking up. Shivangi Shukla getting you the latest, and we are counting down to the Ram Mandir inauguration here on Republic TV. We have the largest team of reporters getting us every detail from Ayodhya. That's a top story. We'll get to all on that, but first the headlines we are tracking right now. Lord Ram's idol has been placed in Ayodhya Temple to be moved to Sanctum Sanctorum today.
Stalin Jr. provokes again, raises mosque demolition now. Prime Minister unveils Lord Ram stamps ahead of the grand Pran Prashishtha. Yogi set to hold key Ayodhya meeting to review preparations. Under lens for Liquorgate probe, Kejriwal skips summons again, claims political vendetta. BJP hits out at Kejriwal in an unrelenting attack. Asked what is he hiding? With 4 days viewers, we're keeping you ahead and bringing you each and every moment that we are in fact witnessing here in Ayodhya, as more and more people in fact are here and celebrating and in fact soaking in all that is happening in Ayodhya as well. Let's straight away get you some voices as to what's happening here and what are they really witnessing. आप बताइए, आप लोग यहाँ पे कब से खड़े हैं? आप यहाँ पे मंदिर जो मॉडल बनाया है उसका तस्वीरें भी ले रहे हैं, अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। अयोध्या किस तरह दिख रहा है? हम लोग को बहुत सुंदर लग रहा है अयोध्या, एकदम जैसे दीपावली की दिन मनाया थे, दुल्हन सज रही है। हर जगह गीत मंगल गाया जा रहा है, राम नाम का चर्चा है, हर जगह राम जी का जयकारा हो रहा है। हर घर में खुशियाँ मनाई जा रही है दीप उत्सव का अच्छे से। जय सिया राम, घर घर में एक ही नारा, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जी बोलो बोलो। घर घर में एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। So we also have more, ladies who are joining us. आप बताइए क्या कुछ बोले? गाना। श्री राम के राज महल में जले घरे घरे दीप अवधि में, श्री राम करा जे तिलक होगा, छाई खुशियाँ जन जननी में। So this essentially is the mood, honestly, to understand, how people are celebrating. They're breaking into songs, they're breaking into dances. We also have several of the senior citizens as well. आपने तो काफी कुछ देखा है अयोध्या में, शुरुआत से देखा है। इस समय जो दिख रहा है अयोध्या में, वो पहले कभी नजारा देखने मिला था? ऐसा कभी नहीं मिला और न जीवन में ऐसा मिलेगा। बहुत अच्छा ये तो प्रभु की जो लीला इस समय अवतरित रूप में हुई है, ऐसी लीला न कभी दिखाई दी न दिखाई देगी। इससे बड़ा सौभाग्य तो कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा कई जन्मों के बाद ऐसा सौभाग्य जो है प्राप्त हो रहा है। वो जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इससे बड़ा कोई अभाग्य भी नहीं होगा, क्योंकि सौभाग्य सभी हिंदू धर्म के लिए, सभी जनता जनार्दन के लिए बहुत ही, क्या कहना चाहिए, इससे बड़ा सौभाग्य तो है ही नहीं। क्योंकि अमृत रूपी वाणी यहाँ परमात्मा के दरबार में बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी के द्वारा जो यहाँ जो है रसास्वादन करा रहे हैं, अमृत जो बरस रहा है उसको हम रसास्वादन सब जनता जनार्दन कर रही है। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज इस तरह से अयोध्या नगरी सजी हुई है जो अनोखी है, इतनी सुंदर है, दुल्हन की तरह सजी हुई है, जैसे ये भी बता रहे थे। We also have some children in fact who have requested that they want to sing for us. आप गाना चाहते हो हमारे लिए? गाओ। हेलो, मेरा नाम आदित्य पांडे है। मैं आप सभी के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान है, रा गया पूजा है अवध का आग जी, होगी संतों की अखियों से छलकाए प्रेम अनुराग जी। थैंक यू। So that essentially is, the children here as well who want to break into songs. That is the mood here because all of them in fact have no words, honestly.
Either it is the chants, or it is the songs, or it is essentially, breaking into dances as well is something that we are seeing. That's what we get to see here in Ayodhya. We have a lot of, people who are gathered here. In fact, we will try to get in a word from them. आप बताइए, आप कहाँ से आए, किस तरह से देख रहे हैं अयोध्या? मैं तो पुणे से आया हुआ हूँ और अयोध्या को तो दिवाली की जैसी मन रही है बिल्कुल भी। 10 दिनों से, मैं पिछले 5-7 दिनों से यहीं पे हूँ और मेरे गुरुदेव का जन्मदिन था, तो उस सिलसिले में आया हुआ था। अब राम मंदिर की स्थापना तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो दूसरी दिवाली जो कहते हैं, दूसरी दिवाली यहाँ पर लोग मना रहे हैं, ना खाली अयोध्या में, पूरे देश भर में। पर अयोध्या में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव जो होता है, दिवाली जो मनाई जाती है, वही बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का जो दिवाली है, मुझे तो लगता है पहले बार से इस बार कई ज्यादा ग्रैंड लेवल पे। आई थिंक इट्स 500 टाइम्स मच मोर बिगर देन द प्रीवियस वंस दैट वी हैव सेलिब्रेटेड। और काफी ज्यादा इंतजार है लोगों का, कई 100 सालों से इंतजार कर रहे थे हम इस दिवाली का, जो कि अभी आया है 500 सालों से। और ये पूरा पिछली दिवाली से ज्यादा भयंकर होने वाला है ये। बिल्कुल। So that essentially is what people are wanting to say. We have another gentleman wanting to say something. आप बताइए। देखिए, ये जो मौका है, और आर भारत को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि सनातन की जब बात होती है तो आर भारत और आप और इतना अच्छा काम करते हैं, और हमको देखकर खुशी होती है कि कई मीडिया ऐसी है जो पक्षपात नहीं करती, जो होता है वही दिखाती है। तो आर भारत एकदम अच्छे से कवरिंग कर रहा है। और देखिए, राम मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 1000 साल की नींव रखी गई है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया। बस कुछ बातें आपको भी पता है, जैसे शंकराचार्य का बयान हो गया, विपक्षियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, वो नहीं करना चाहिए था। इससे एक फूट की तरह सब कुछ हो गया, फूट पड़ गई, तो ये नहीं करना चाहिए था राम भद्राचार्य को। So essentially that's what the mood here is, of the people, all of them breaking into dances and songs as well. In fact, my colleague Rakshita is also joining us from the Ram Ki Paidi. Rakshita, all we can hear right now are chants of Jai Shri Ram. All we can hear right now are bhajans that people are breaking into. All that we can hear right now are children wanting to sing for Lord Ram and waiting for 22nd of January. What are you witnessing where you are? Yeah. Well, of course, we are seeing people, we are here since morning, and people are, there's more and more people that are turning up. The crowd is only getting bigger and more colorful, as you can see right now. Sister Channel Republic Bharat also, there are a lot of crowd over there on our Republic stage, and there are people who are singing bhajans, and people around us are also very excited. Ma'am, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं की हूँ, मैं अयोध्या की ही। तो मैं आराम के आज वो है, वही हम डेली आते हैं, हमारे सदस्य हैं, उसी के वर्क काम भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए। तो हम बहुत खुश हैं। आज लग रहा है जैसे हमारे राम स्वयं आए, जैसे 14 वर्ष के बाद आए थे। बहुत खुशी है। तो क्या मैं एक भजन गा सकती हूँ? जी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो आरती सजाऊंगे, मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, ओ राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे कुटियों के भाग्य आज जग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया गाया आपने। और क्योंकि आपने कहा कि आप यहीं से हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव आए अयोध्या में? मैम, बहुत कुछ बदल गया है। जैसे आप देख सकती हैं कि अयोध्या जो भी आएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा। जो यहाँ के लोग हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इतने सालों में कुछ भी नहीं, ऐसे गंदी संदी सी पड़ी रहती थी, किसी ने कोई काम नहीं किया है। किया है तो उन्होंने किया है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो आना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, राम जो बुलाएंगे वही आएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो भाग्य से आ रहा है, जिनको भेजा गया वो नहीं आए तो उनका दुर्भाग्य है। हम यही कहते हैं कि जिस दिन 22 तारीख को सब लोग शांति बनाए, अपने घर में
भव्य उत्सव करे, दीपावली के जैसा त्यौहार मनाए, मिठाइयाँ लाए, जैसे मनाया जाता है दीपावली, भव्य दीपावली मनाए। और सारे लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने मंदिरों को सजाओ, छोटी हो या बड़ी हो, बहुत बेइज्जत करो कि ऐसा लगे कि राम अयोध्या में 14 वर्ष के बाद जैसे आए हैं वैसे 500 साल बाद आए हैं हमारी अयोध्या में। Right, बिल्कुल, of course it's a festive mood here, as the lady just said that it is going to be celebrated like Diwali, and we are getting more inputs how it is being celebrated, right from the sweets to the prasad that is being made. You know, it's made in the traditional style. So here's a report by my colleague Priyanka, who tells us more on that. Nation is awaiting the 22nd of January, a very special moment. In fact, we're trying to capture with our cameras from where we are standing right now. In Ayodhya, in fact, this is the beginning of the Chappan Bhog that will be made for the 22nd of January, after which it will, in fact, as a prasad, will also be distributed in the rest of the country. Let's take our viewers through as to what exactly is going to be made here, because you can see that the puja, in fact, of these particular vessels had also just been carried out. You can see buckets full of ghee that is kept here, and along with that flour as well. There are laddus being made as we speak. That is the first part that is going to be made. The cooks, the halwai as we call it, are in fact hard at work. We will try to speak to some of the officials here to help us understand better as to how exactly all of this prasad is also going to be made and how it is going to be distributed in the rest of the country as well. So because as of now we are looking at laddus. Sir, हम देख रहे हैं कि बनाए जा रहे हैं, हलवाई लोग सब काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है, ये जो उनके बर्तन है उनकी पूजा भी हो चुकी है। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है छप्पन भोग में, क्या कुछ प्रसाद की तरह बने? देखिए, अभी यहाँ पर हमारे ये जो भोग स्टार्ट हो रहा है बनना, उसमें यहाँ पर बूंदी प्रसाद बन रहा है। ये पूरे देश में वितरित होगा और इसकी 3 से 4 हफ्ते की लाइफ होगी, जिससे पूरे देश में आसानी से चला जाए और सभी राम भक्तों को मिल जाए। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग हमारे जो स्थान है वहाँ पर 56 भोग बन रहे हैं, और उसमें क्या है कि सभी लोग अपने प्राण से लगे हुए हैं भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तो जो सारे भोग बन रहे हैं वो भी बहुत दिव्य और भव्य बन रहे हैं, जिससे कि वो सभी की फीलिंग्स उसमें ऐड हो सकें और पूरे देश में जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, सीताराम सरकार के फॉलोअर हैं, उसमें वो सब अच्छा रहे। इसके लिए अभी श्री राम जी की ननिहाल जो दंडकारण्य में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ सामान आया है, और जनकपुर और सीतामढ़ी जो माँ सीता का माँ भूमिजा जिनको हम कहते हैं, धरती पुत्री, उनके मायके से भी कुछ सामान आया है। कहीं से मेवा आ रही है, कहीं से घी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है और विश्व के अनेक देशों से भी लोगों ने अपना सहयोग किया है। उन सब जो कुछ लोगों ने अपनी भावनाओं से जो अयोध्या में लेकर आए थे, उसका भी अब इसमें उपयोग हो रहा है, जो 56 भोग बनाया जाएगा और ये 22 जनवरी को लोगों को दिया जाएगा और उसके बाद भी भेजा जाएगा। उसमें क्या कुछ बनेगा? और ऐसा है, जो भी कुछ बन रहा है वो सब प्रभु की इच्छा और कृपा से है। उसमें हम लोग तो एक माध्यम है और वो जो प्रभु चाहेंगे वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी क्या है, क्या क्या बन रहा है, ये राम जी की कृपा है। वो जो जब वितरित होगा तो सारा देश देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी है और क्या भोग प्रभु को अर्पित हुआ और क्या वितरित हुआ। इस वक्त यहाँ पे खाली अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं? जी, यहाँ ये भोग बन रहा है और बाकी जगह पर और भी चीज़ें हैं। So you can see, Shivangi, how essentially the preparation is going on, because this is the first beginning of, in fact, the prasad that is going to be given to the devotees from 22nd of January, after which will be distributed in the rest of the country. That has now begun, and in fact there was a puja that was carried out of all of the vessels, and now the cooks and the halwai, in fact, are hard at work. They're making the prasad that will be distributed not just to the devotees who will be able to be in Ayodhya on 22nd, but also in the rest of the country. Well, viewers, we're cutting across to some more breaking updates that we're picking up as far as the 22nd January goes. Now, the centre, in fact, has announced partial holiday on January 22nd.
Now, the centre has announced in fact the partial holiday on the 22nd of January and half day for government staff on the 22nd. In fact, this is due to the overwhelming sentiment of the employees and requests from them that the central government has announced the half day closing till 2:30 p.m. on 22nd of January 2024 at all of the central government offices, central institutions, central industrial establishments throughout the country on the occasion of the Ram Temple Pran Prashishtha ceremony that will be carried out in the daytime on the 22nd of January. So this is a big update, viewers, that we're putting out on your screens. How the centre in fact has announced this partial holiday on the 22nd of January as the entire country awaits the consecration ceremony that will take place and in fact is expected to end at about 1:30 to 2 p.m. and the half day that has been announced by the government is also closing till 2:30 p.m. as well. And now we are also being told that this is due to the overwhelming sentiment of the employees and the requests from them that the central government has now taken this decision. As viewers, the rest of the country as well prepares for the 22nd of January, the entire city of Ayodhya preparing for the 22nd of January, and now we are looking at the half day that has also been announced by the central government for the government employees. That is applicable to all central government offices, central institutions and central industrial establishments throughout the country. Now this is of course on the occasion of the consecration ceremony of at the Ram Temple, the Pran Prashishtha as we call it, that is already underway. In fact, 2 to 3 days ahead of the 22nd of January, we are already looking at the crescendo of the celebrations that are going on, and this has been reiterated in the circular as well, that has cited that the overwhelming sentiment of the employees is the reason why this decision has also been taken by the central government. Already, viewers, we are tracking for you all that is happening on the ground. The people of the country already in a celebration mood. All of them, in fact, stating that this is a fight that they have fought for the last 500 years. And now we are looking at the temple finally being built. A lot of emotions as we see in the people of Ayodhya and the people of the country. And why should the government employees be any different? And that is why we are tracking for you the latest as far as the central government's decision is concerned, that has now announced that there will be a half day for all of the government employees that will be applicable to, in fact, the central government offices, central institutions and central industrial establishments throughout the country, where the government employees, in fact, can be and will be able to clock out at 2:30 p.m. on 22nd January. We're getting more breaking news right now. Breaking news coming in right now with just 4 days to go for the Pran Prashishtha. Congress is back at it, and it's now Congress leader Udit Raj who has said that it will be a Kalyug for the Dalits. It will be a Kalyug for the Dalits after 22nd of January. That is what another incendiary statement coming in from a Congress leader. I'm told I'm getting a reaction for more on this. Abhishek sir is okay. Abhishek Kapoor is joining us on the phone line for more. Abhishek, the Congress is back at it. Now there are such strong statements, incendiary statements coming in from Udit Raj saying that it's going to be a Kalyug. We're talking about Ram Raj, we're talking about Satyug, we're talking about Treta Yug. And everybody is excited here in Ayodhya, but the likes of Udit Raj cannot see any positivity and calling it a Kalyug for the backward. Well, obviously, Rakshita, this is a provocative statement and in line with the overall position that the Congress party has taken. Festivity that's going on across the country, and not to join in the sentiment of the larger mass of humanity of the country, but to sort of even go and continue to disparage the sentiments and to insult the sentiments, it seems. We don't know whether Udit Raj, what he has said, has been endorsed or is going to be endorsed in any manner by the Congress party, because it's already paying some price and facing some brunt for the position of not attending the Pran Prashishtha despite the invite to Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary.
But this is in line with the overall position that the Congress party and the larger Indie space parties have taken, Rakshita, attacking the Hindu religion and from the DMK to the Congress party to the Samajwadi party, the likes of Swami Prasad Maurya, to the RJD and the elements within these parties have been taking pot shots at the event, at the occasion, and what Udit Raj has said is absolutely a continuum and a continuation of a very disconnected position that the Congress party and the opposition parties, Indie parties have taken vis-a-vis the Ram Temple Pran Prashishtha. Obviously, there would be a reaction more than from the BJP, from the masses, because this is a discordant note. This is going to leave a bad taste and perhaps not even good politics if the Congress party so realizes. All right, viewers, back-to-back breaking updates that we're putting out on your screens right now as far as the opposition is concerned and the politicization of the Ram Temple of the 22nd of January. Now, stoking a fresh row, the Shivpal Yadav, in fact, has now stated that the car sevaks were fired upon to protect the constitution. We have been getting all of the statements that we have been tracking for you viewers as far as the opposition leaders are concerned. The politics as well that is being played on the 22nd of January, the politics around the Ram Temple, the politics over the 22nd of January in the invitation as well, and now in the latest, we see that Shivpal Yadav has now said and making a reference to the 1990 agitation and stating that the car sevaks who were fired upon was done so to protect the constitution. Let's listen in as to what Shivpal Yadav had to say. संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बारहवीं मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। महाराज जी आइए। Well, all right, viewers, we are looking at how Akhilesh Yadav's party members, in fact, have been politicizing this entire consecration ceremony, politicizing the entire Ram Temple, and now once again has also politicized and made a controversial statement about the 1990 agitation and how the car sevaks, in fact, had been fired upon. He is now justifying that and has stated that this was done to, in fact, protect the constitution, is something that he has stated. We are here in Ayodhya. We will try to speak to people about it because, of course, a lot of sentiments about the car sevaks and the entire agitation as well. And now, once again, we are looking at the politics around this entire issue as well. अब बताइए सर, हम काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स, बयानबाजी देख रहे हैं राजनेताओं से, पॉलिटिशियंस से, और अभी जो अखिलेश यादव के जो एक नेता हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि कार सेवक के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी 90 में, वो संविधान को बचाने के लिए थी। आप किस तरह से देखते हैं ऐसे बयानबाजी? देखिए, संविधान बचता है धर्म को बचाने से। यदि धर्म नहीं बचेगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। राजनीति धर्म नीति के अनुसार होनी चाहिए। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। उस समय जो राजनीति, हाँ, उस समय जो कुछ भी हुआ था, कार सेवकों पर गोलियां चली थी, वो धर्म नीति नहीं थी,
वो वोट की राजनीति थी, राजनीति से बहुत दूर की चीज थी, उसका नीति से कोई लेना नहीं था। रावण को सूर्पनखा समझा रही है कि राजनीति क्या होती है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। जिस नीति में धर्म ना हो वह नीति नहीं हो सकती, वह राजनीति नहीं हो सकती। आप अयोध्या से ही हैं? जी। तो आपने कई साल देखे होंगे अयोध्या में, आपने उस पार्टी का भी राज देखा होगा, तो आप किस तरह से देखते हैं जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की भी जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो अभी भी बरकरार है? ऐसे बयानबाजी को हम देखते तो समझ आता है। From BJP right now, BJP's UP leader Anila Singh is joining us on the phone line for more. Ms. Anila Singh, if you can hear me, we are getting reactions from the Indie leaders. First, Udit Raj says it will be a Kalyug. It is going to be Kalyug for backward classes after 22nd of January. And now we have Akhilesh Yadav. We have the Samajwadi Party that is now defending firing on the car sevaks. How do you react to this? My Ram Ram to all, and if I talk about these statements given by Swami Prashad Maurya or Udit Raj or so many leaders who are saying so dirty things about Bhagwan Shri Ram, about 22nd of January Pran Prashishtha event. So it is their thought process, because they are Ravan Premi, because they have got Rakshas Pravritti. That is why they are talking in that way. And if I talk about Shripal Yadav, who is saying that car sevaks, gunfire was open on car sevaks, because they wanted to save constitution. So I need to understand one thing: since when Samajwadi Party has delivered things according to the constitution? Killing somebody, killing Hindus, slaughtering Hindus is to save constitution. The only wrong which they did according to Samajwadi Party was that they wanted Ram Lalla Mandir to be constructed there and Babri Masjid should be removed. When government did not listen, when court did not listen, then they had to take this action. It was the love for Bhagwan Ram, and for that they were killed. Now they are justifying it. So let them do whatever they want to do. All of the nation, each and every Ram Bhakt across the world, they are watching them. Right. Ji. Thank you so much, Ms. Anila Singh, for joining us here on Republic TV with that reaction of yours. But we also, this actually reflects a lot, it speaks a lot, viewers. This is happening right in the run-up to the 2024 elections. India Alliance has no clarity on its seat sharing. It seems they are having conflicting views. But one thing it seems they are united on is that insulting the Sanatan Dharma and the sentiments of the Hindus. I have with me many people at the Ram Ki Paidi. Sir, हम here with us, इनको भी न्योता मिला है राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो जाने वाले हैं। लेकिन पहले तो हम जो अभी खबर चला रहे थे कि किस तरह से कार सेवकों पर जो है गोली चलाना भी समाजवादी पार्टी डिफेंड कर रही है, उसका बचाव कर रही है। किस तरह की आप इस मानसिकता को मानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामसिंह मानस में उल्लेख है कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, जो कपटी होता है, जो कुटिल होता है, उसको संत सभा, राम सभा अच्छा नहीं लगता है। यही सरयू के तट पे हमारे कार सेवक साधु संतों पे मुलायम सिंह की जब सरकार थी तब गोली चला था, इसीलिए निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। उनको मालूम है कि मैंने कार सेवक पे गोली चलवाया था, मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार टेंट से अब अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। इस दृश्य को साधु संत देख रहे हैं, बड़ा मगन और अनुष्ठान हो रहा है। मगर कुछ राम विरोधी, मैं उनको बहुरुपया भी कह रहा हूँ, काल नेमी भी कह रहा हूँ कि मठ मंदिर में जा करके भगवा वस्त्र को धारण करके चाहे राहुल गांधी चाहे सोनिया गांधी लगातार मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और राष्ट्र में आप रहते हैं तो राष्ट्र में आपको आना चाहिए। और जो राम का विरोधी उसका समाज विरोध करता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं वो विपक्षी नेता से कि सावधान हो जाओ, तुमको सद्बुद्धि मिल जाए। मैं बार बार कहता हूं अगर सद्बुद्धि नहीं मिलेगा तो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म के विषय में केवल बोलते
बोलते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो इस्लाम के धर्म में बोलो और अन्य धर्मों में बोलो। तुमको मालूम है कि हिंदू धर्म एकतावान है, क्षमावान है, दयावान है, इसीलिए तुम लगातार बोलते होते हो, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे जो हो। जी, we can see the chanting of course reverberating since morning and since yesterday of course we've landed here. सर, ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कलयुग आ जाएगा पिछड़ी जातियों के लिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, राम राज्य आएगा तो किसी के लिए कलयुग नहीं होगा, उसमें सब समान होंगे। और मैं तो बहुत समय से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। सन 1988 से ही मैं आंदोलन शराब विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष रहा। एक तो बात ये भी हो गई, पहले राम का नाम लेने में लोगों को डर लगता था, लेकिन आज कोई राम का विरोधी नहीं रह गया, भले वो ना आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो राम विरोधी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा राम विरोधी नहीं, राम विरोधी कोई नहीं है। नहीं, सुनो बात सुनो, हमने वो सुने बात सुनी मेरी। जो गोली चलवाया, मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, उसको पद्म भूषण दिया गया। क्यों दिया? किसने दिया? उसको किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। यदि दिया गया तो उसको वापस होना चाहिए। क्यों दिया गया? इसीलिए कि उसने गोली चलवाया। वह पुरस्कार भाजपा ने दिया उसको पद्म भूषण का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई राम विरोधी नहीं है तो 2-3 चीजें होनी चाहिए। पहली बात कि भारत को जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वह धर्म सापेक्ष होना चाहिए। दूसरी बात सुनिए, जो भी राम का विरोधी है उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो भी हो चाहे कोई हो। In fact, viewers, we are tracking for you all the important voices. And on that note, joining me on this broadcast is the former Deputy Chief Minister of the Uttar Pradesh, Dinesh Sharma. दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग अयोध्या में से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अयोध्या के निवासियों से भी बात कर रहे हैं। उनका भी गुस्सा बरकरार है जब वो बयानबाजी सुनते हैं, उदित राज के बयान आते हैं या फिर जो अखिलेश यादव के पार्टी मेंबर्स के नेता हैं उनके बयान आते हैं, कहते हुए कि जो कार सेवक के ऊपर गोलियां चलाई गई वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाई गई थी। आपके योर फर्स्ट थॉट्स सर? मैं इस समय तमिलनाडु में हूँ और श्री रंगम स्वामी के मंदिर पे हम लोग गए थे। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी यहाँ तमिलनाडु आने वाले हैं। पूरा तमिलनाडु नहीं, पूरा भारत राममय है इस समय। और उत्तर प्रदेश में लोग राम के विरोध में, राम भक्तों के विरोध में बयान दे रहे हैं, जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। एक तो गोली चलाई, राम भक्तों को निर्दोष लोगों की हत्या करी, और उसके बाद आज उसको कह रहे हैं वो ठीक था। समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है और जो भक्त थे वो अराजक तत्व थे। कौन सा संविधान उनको परमिशन देता है कि निहत्थे लोग जो भजन कीर्तन कर रहे हो, जो मंदिर में पूजा कर रहे हो, वो जाके टारगेट करके गोली मार दो? ये कौन सा कानून कहता है, कौन सा नियम कहता है, कौन सा संविधान कहता है? लेकिन ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आज उसका पश्चाताप करने के बजाय आज भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर माना है, तो आज उनको बाबरी मस्जिद कहने की क्या जरूरत है? हिंदू और मुसलमान के बीच खाई क्यों पैदा करना चाहते हैं? मुस्लिम वर्ग ने बड़ी शालीनता के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना है। समाजवादी पार्टी क्यों उनको विग्रह पैदा करना चाहती है? आप दर्शन करने के लिए नहीं गए, ये तो समझ में आता है कि आप हिंदू विरोधी हैं। लेकिन आज आप जो राम भक्त हैं, उनके बलिदान को आप अपनी हत्या करने वाली नीति का समर्थन करके क्यों दुष्प्रचारित कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी देश में एक अलगाव चाहते हैं। मैं यहाँ पर तमिलनाडु में हूँ, यहाँ डीएमके की भाषा वही है जो कांग्रेस की है, वहाँ कांग्रेस की भाषा जो है वही समाजवादी पार्टी की भाषा है। ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये सनातन को और हिंदू धर्म को आघात पर आघात पहुंचा रहा है। इसका जवाब जनता लोकसभा के चुनाव में देगी। All right, sir.
That was the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, responding on these political statements, viewers, that are coming to light from the leaders of the Samajwadi Party, of the Congress Party, then be it, all of them stating that the Kar Sevak agitation, in fact, that had went on in 90 was justified. It was to protect the constitution. Let's straight away get in a word from the people of Ayodhya as to how they are seeing it. They are the ones who had in fact witnessed that entire agitation as well. Let's understand from them as to how they are looking at it. आप बताइए, आप अयोध्या से ही हैं? हाँ, अगर आप तो आपने कई साल देखा होगा, जो 90 का भी जो एजिटेशन हुआ वो भी आपने देखा होगा। उसके ऊपर अब हम देख रहे हैं कि राजनीति की जा रही है। उसके ऊपर कहा जा रहा है अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो कर सेवक के ऊपर गोली चलाई गई वो जस्टिफाइड था, वो संविधान को बचाने के लिए। जी नहीं, बचाने के लिए हम तो वहाँ थे जब गोली चली है, तो जब बहुत चलने लगी, जब खून की नदियाँ बहने लगी तो हम लोग भागे। क्या करें वहाँ भाई, हम तो वहाँ थे इस समय पर। मगर अब क्या किया सरकार, अब जो मोदी सरकार कर रहे हैं, कितना सुंदर काम हो रहा है? सबसे सुंदर काम हो रहा है। आनंद ही आनंद है, सबकी खुशी है जनता को, और क्या है। तो जो राजनीति जो हो रही है इसके ऊपर, वो आप किस तरह से देखते हैं? उदित राज ने भी कहा है कि ये जो दलित है उनका कलयुग आ गया है, क्योंकि ये जो मंदिर बनाया जा रहा है वो एकदम पॉलिटिकल एक तो इवेंट बना दिया गया है, बीजेपी का इवेंट बना दिया गया है। किस तरह से विपक्षी लोग मैम ऐसे चिल्लाते ही रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं 400 प्लस सीट जाएगी। इतनी पब्लिक जो है अयोध्या में भ्रमण कर रही है। सीट की बात नहीं, अगर हम बात करें कि खाली मंदिर की जो बात है उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो किस तरह से? वो मैम एकदम सरासर सब गलत राजनीति हो रही है। जो हो रहा है सब फैक्ट ही हो रहा है। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा राम मंदिर जो 500 साल का मुद्दा था, मोदी जी तो बना दिए। वही हम बार बार कह रहे हैं कि मतलब मंदिर वही विपक्षी का बोल रहे थे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। एक बार हम न्यूज में मतलब टीवी मीडियम देखे थे कि वो गोली चलवा दिए थे। हमारे कार सेवकों के ऊपर कितने लोग बलिदान हो गए, मतलब वो मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन इन लोगों विपक्षी लोग यही चिल्ला रहे हैं कि यही चिल्लाते रहे 500 साल परसों से आते रहे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी और योगी जी जो है मतलब राम मंदिर भी बना दिए, सारा सिस्टम भी लगा दिए। अभी फिर इसके बाद अयोध्या के बाद मथुरा काशी भी बनाया जाएगा। इसी हिसाब से ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये लोग अपना मिटिया बांध करके उल्टा, मतलब ये लोग के पास कुछ बचा नहीं है। So that essentially is the response coming in from the people of Ayodhya. We chanced upon, in fact, some of the senior citizens who had been there during the agitation. They have their own views about the politics, in fact, stating that they are insulated from it. They are not perturbed by it. But viewers, we are also bringing you each and every update as far as the celebrations go, as far as the January 22nd go, because the people of Ayodhya, as I said, insulated from the politics. There are people from across the country pouring into Ayodhya, bringing their offerings for Lord Ram. Let's listen in to this one report of a gentleman who has brought glass bangles which have been inscribed with Lord Ram for 22nd of January. Let's take a look. From across the country, there are gifts and offerings that are pouring in to Ayodhya, and people are in fact making and crossing a journey of 1,000 kilometers to come to Ayodhya with their offerings and their gifts. One such gentleman, in fact, is joining us right now from Firozabad, who have brought bangles that have been plated with golds and also the images of Lord Ram and Sita that have been embedded in these bangles as well. So these are the special bangles, in fact, that have been brought in. Of course, a very special part of it is that these are around 20,000 bangles that have been brought in especially for the Pran Prashishtha, for the consecration ceremony, and for essentially to be given to the devotees on the 22nd of January as well. Thank you so much हमसे बात करने के लिए। आप फिरोजाबाद से आए हैं, पूरा ट्रक भर के मैं देख रही हूँ कि ये चूड़ियाँ लेकर आप आए हैं। कितनी चूड़ियाँ यहाँ पर लेकर आए? ये 20,000 कंगन है। 2 कंगन का एक पैकेट है, ऐसे 10,000 पैकेट लाए जी। 10,000 पैकेट आप लेकर आए हैं और 22 जनवरी को देने के लिए आए? जी जी जी, श्रद्धालुओं को कमेटी बांटेगी और ये विशेष तौर से बनाए गए हैं। ये एक तो बगैर जॉइंट का है और ये गोल्ड प्लेटेड इसमें है, गोल्ड लगा हुआ है। और ये विशेष बात इसमें ये है, हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों कारीगरों ने मिलकर। कितने दिन लगे आपको ये 20,000 कंगन इकट्ठा करने में, बनाने में? 6 महीने से लगातार कार्य चल रहा है।
प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई थी उसी दिन से शुरुआत हो गई थी इस काम की, और आज आपके सामने है और बरकरार काम अभी भी चल रहा है। ये तो 22 तारीख के चक्कर में अभी देने गाड़ी एक भिजवाई थी, बाकी आगे भी आएंगे। तो 22 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा ट्रक भर के यहाँ पर 20,000 कंगन लेकर आ चुके हैं, और सारे जो लोग आए हैं उनको प्रसादी के तौर पे भी आप उनको देंगे? जी जी, नहीं, मंदिर प्रशासन देगा, हम मंदिर कमेटी को सौंप दिया है। मतलब 22 जनवरी को जो भी अंदर जाएगा उनको, और पूरे मतलब आप 20,000 लाए हैं तो जितने लोग आएंगे और जो ना भी आ पाए उनमें भी आप बांट रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so that essentially is, another part of the gift, in fact, that has been brought in from Firozabad. A glass bangle, which is the place that is famous for making glass bangles, gold-plated and embedded with the pictures of Ramayan, of Lord Ram, of Mata Sita. And that essentially is what we are seeing in form of gifts that are being brought in, boxes full of these bangles that have been brought in. Of course, the gifts pouring in from across the country here in Ayodhya. People gearing up for the 22nd of January. With video journalist Vipin Mori, I'm Priyanka Sharma, reporting from Ayodhya for Republic. लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, जय श्री राम। So you can see that the atmosphere is only building up, and we can imagine what can happen just on the eve of the inauguration. But right now, stepping to a very, very short break, viewers. On the other side, we'll get you more live action straight from Ayodhya. On the other side, stay tuned to Republic TV. पता है ये लंबी सी मेट्रो लाइन क्यों बनी? सिर्फ इसलिए कि पापा जल्दी घर पर आए और ये दोनों उनकी गोदी में छलांग मार पाए। कहीं एक नई रोड ने साइंस को शहर से गांव तक पहुंचाया, ताकि पूर्णी चांद तक पहुंचने का सपना देख पाए, और हमारे जवानों के कदम कभी न रुके। सिर्फ इसीलिए कहीं एक मजबूत पुल बना है। देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक में हम मानते हैं, इंडिया बनता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया। Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। बादलों पे चल के हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा, हौसलों को कस के तूफानों से लड़के मैं बनाऊंगा मैं। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। उड़े देश का आम आदमी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान।
Hello, a very warm welcome. We are live from Ayodhya. We are at the Ram Ki Paidi right now. As you can see, the excitement is building up as the day is nearing. Less than 100 hours to go. Less than 100 hours to go for the grand Ram Temple inauguration. Today is the day. It's day 3 of those 7-day rituals. The Anushthan that is happening ahead of the Pran Prashishtha. This is part of the Pran Prashishtha, in fact. And today is day 3 when Ram Lalla's idol will be placed in the Garbhagriha. It's a 500-year-old wait, viewers. And you can see around me there are devotees who are so excited. Day by day, they are in fact emotional. And I have with me many people who are very much waiting. आज जो है तीसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान हो रहे हैं। राम लला का गर्भगृह में आज प्रवेश होने वाला है। जी जी, भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश होने जा रहा है और हम लोग अयोध्यावासी खूब खुशियां मना रहे हैं क्योंकि यह अवसर बहुत दिन के बाद हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है और लगता है जैसे त्रेता युग पुनः लौट करके आ गया हो। बड़ी प्रसन्नता है और हम सब लोग अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। एक गुरुकुल के बच्चे हैं सब। हमारे गुरुकुल का नाम है विप्र संजीवनी परिषद। मैं उसका संस्थापक आचार्य हूं। ये वहाँ के बच्चे हैं, सब वैदिक बच्चे हैं, व्याकरण, साहित्य, वेद वेदांत आदि विषयों को जानने वाले हैं और हम सब लोग सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और ये प्रसन्नता का वातावरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा अयोध्या के लिए विकास किया है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल, हम आपसे और बात करेंगे। राइट नाउ व्यूवर्स, वी आर गेटिंग मोर इनपुट्स एज द रिपब्लिक टीवी इज गेटिंग यू द बिगेस्ट कवरेज, द बिगेस्ट नेटवर्क, रिपब्लिक नेटवर्क इज गेटिंग यू द biggest and most extensive and exclusive coverage from Ayodhya. Now let's take a look at this report filed by our sister channel Republic Bharat, speaking exclusively with BJP MP from Mathura, Hema Malini, who is in Ayodhya. होई सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बढ़ावई साखा। यानी कि ऐतिहासिक जो तारीख है वो नज़दीक है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री, ड्रीम गर्ल के नाम से जिनको जाना जाता है और मथुरा से सांसद भी हैं। हेमा मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में। यहाँ पर ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, तारीख नज़दीक है। मुझे लगता है कि अयोध्या में एक सपना साकार होने जा रहा है जो आपने भी देखा है और सभी ने देश में देखा हुआ है। आप आए हैं यहाँ पर, कैसा अनुभव रहा और कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का और अनुभव हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब से हम परसों फ्लाइट में बैठे थे तो इतने जनता जो भी थे फ्लाइट में, सब नारा लगाते लगाते फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। लैंडिंग में भी ये नारा कभी सुना नहीं इन ए फ्लाइट से। इतना अच्छा एक माहौल बना हुआ है पूरा देश में, हर जगह, वेयर एवर यू गो दिस इज हैपनिंग। इवन आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे भी फॉरेन में भी लोग इतना खुशियाँ मना रहे हैं, ऑल द भारतीय लोग। तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक वेरी स्पेशल ओकेशन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। एंड इट्स फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट फॉर वन पार्टी और एक व्यक्ति के लिए नहीं बन रहा है ये मंदिर, पूरा देश के लिए बन रहा है। देश का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति इतना आस्था है लोगों को, इतना प्यार है, इतना सम्मान है, तो उनका जो मंदिर बनेगा तो इतनी खुशी तो होगी। अभी तो एक मंदिर बन रहा है, अभी देखिए और बहुत सारे, जैसा मथुरा इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स, लाइक दैट अयोध्या में भी होने वाला है, बहुत सारे मंदिर बनेंगे। अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। हाँ जी ठीक है। नहीं, मथुरा में ऑलरेडी है बहुत सारे, मैं बोल रही हूँ। नहीं, कृष्ण जन्मभूमि का। हाँ जी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, विपक्षी पार्टियों को। यानी कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं आरएसएस का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं हम 22 को नहीं जाएंगे, बाकी हम कभी भी जाएंगे। अच्छा, ऐसे बोला उन्होंने। That's too funny। तो आना तो अभी आया, कोई बात नहीं, बाद में आएंगे तो उनका फिर पुण्य मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने मीराबाई के तरीके से भी परफॉर्म करते हुए देखा था मथुरा में, आपने यहाँ पे भी परफॉर्म किया है। आपको कैसा लगता सीता है? बने थे। हाँ जी, सीता जी का परफॉर्मेंस दिया है। आपको कैसा लगता है ऐसे परफॉर्मेंस देने में? और धर्मेंद्र
देखिए हम देखते हैं हजारों शोज कर चुके हैं। इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ शो। आप लोग ऐसा बात करते हैं मेरे से। तो आई डन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शोज ऑफ ईच एंड एवरी बैले। तो मैं यहाँ करूँ या कहीं भी और भी करूँ या एकदम छोटा सा गांव में भी करूँ तो मेरा परफॉर्मेंस यही रहेगा। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। सो विथ फुल डेडिकेशन वी परफॉर्म माय होल ट्रूप के साथ। तो यहाँ पे अयोध्या में किया था। इसका सिर्फ इतना ये है कि राम मंदिर अभी बनने वाला, उसके दौरान उसके साथ साथ मैं ये जो प्रोग्राम कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, अयोध्या में जैसे हम देख रहे हैं तमाम चीजें हो रही हैं, विकास हो रहा है, एयरपोर्ट हो गया है, आर्थिक दृष्टि से भी अयोध्या आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो आप जो पहले सिर्फ एक कस्बा था सुना, अयोध्या इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज दैट सिटी, फैजाबाद इज द मेन सिटी। उसमें एक छोटा सा एक कस्बा था अयोध्या। हाउ कैन यू डू दैट? अयोध्या इतना दिन मालूम भी नहीं था कि अयोध्या है करके यहाँ। तो अभी उसको उजागर किया है हमारे मोदी जी ने। तो आपको लगता है कि कुछ और ऐसा क्या होना चाहिए? कुछ और भी होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, काशी का हो गया। काशी विश्वनाथ वाज इन ए वेरी बैड शेप। आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। शो करने जाते हैं तो मंदिर तो जाएंगे तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मंदिर कैसे जाएंगे, एक क्वेश्चन आता था। अभी देखिए क्या बनाया, कमाल का बना दिया है। तो लाइक दैट ऑल ओवर इंडिया जो इम्पोर्टेंट धर्मस्थल है उनको सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो साउथ में इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे लाइक तिरुपति एंड ऑल इन ए वेरी नाइस कंडीशन ऑलवेज। यहाँ नॉर्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम। सो दैट इज उत्तर प्रदेश में स्पेशली आई विल थैंक आवर योगी जी ऑल्सो फॉर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट एंड गेटिंग थिंग्स डन। तो अभी अयोध्या में हो रहा, मथुरा में काफ़ी अच्छा डेवलप बहुत कुछ हुआ है। अभी जो रही ये जो जन्मस्थल की कृष्ण जन्मस्थल, उसका भी जो ज़रूरी होगा तो डेफिनेटली होगा वो काम। और इवन मुझे लगता है कि यही देश में ही जय श्री राम नहीं गूंजता है, बाहर विदेशों में भी गूंज रहा है। जैसे ब्रिटेन के जो पीएम ऋषि सुनक आए थे, उन्होंने जय श्री राम बोला। एवरीबॉडी से जय श्री राम। बिल्कुल। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि उस दिन दीपोत्सव होगा, हर कोई अपने घर में दीपावली मनाएगा। हर कोई तो नहीं आ पाएगा। हर कोई दीपावली मनाइए, बहुत ही खुशियाँ मनाइए, दीप जलाइए और राम का नाम लीजिए, राम का कुछ भजन कीजिए। एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स तो राम को याद कीजिए, तो बहुत ही पुण्य मिलेगा। एंड देन बाद में ज़रूर आइए, अयोध्या आकर ज़रूर देखिए इस मंदिर को। जब कंप्लीट हो जाएगा तो और भी बहुत सुंदर लगेगा। अभी इट्स वेरी नाइसली बीइंग डन नाउ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Getting you the exclusive coverage ahead of the grand inauguration of the Grand Ram Temple. I am Rakshita Mishra reporting from the Saryu Ghat from Ram Ki Paidi in Ayodhya. Getting you the latest on the other side, also from Ayodhya. Stay tuned to Republic TV. MG Astor, it's built around you. Welcome, Hank. Hello, Astor. It's your connected world. Your playground. Hello, Astor. Open sunroof. Opening sunroof. Introducing MG Astor 2024. Now starts at 9.98 lakhs. Dadu, Yes? what does premium mean? Beta, premium you can say is like petrol. The car will keep going till the time it has petrol. Once petrol is over, the car stops. But Dad, this time even if the petrol is over, our car won't stop. How come? With LIC's Jeevan Labh, even after the premium payment tenure is over, the policy's benefits continue. That means our journey of happiness will continue non-stop. LIC, हर पल आपके साथ। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में
पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। This is Republic Niva Bupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी जी। जो भी मतलब लोग सरकार नूं टैक्स जमा कराउंदे आ, वो टैक्स ही ये लग रहा जी, ते सानू संतुष्टि है सरकार तो जी। पंजाब सरकार दा, भगवंत मान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Very good afternoon, viewers. We are live from Ayodhya. I am at the Ram ki paddy right now. We just heard a beautiful bhajan because Ayodhya Ram is in fact reverberating in the air across the length and breadth of Ayodhya and the country. But first, let's take a look at all the top stories and we'll come back with our extensive coverage from Ayodhya. Ram Lalla's idol set to move to Sanctum Sanctorum today. All eyes on the grand Pran Prashishtha. But Indy goes all out to mar India's big moment. Stalin Jr. provokes with mosque demolition remark. Akhilesh Yadav's leader insults Ram Bhakt, says car sevaks fired upon to protect the constitution. And Sonia's party leader tries to fearmonger, says Kalyug for Dalits after 22nd January.
Under lens for Liquorgate, Kejriwal skips the ED summons again. BJP hits out asking, what is he hiding? And Congress tie-up sparks mega exodus from Aam Aadmi Party. Top Haryana leader and 46 others quit the party. Wait, viewers, that the country is now going to witness history after 500 long years, viewers. This has been a movement of decades, but the weight of centuries. And I have with me many enthusiastic students of a Gurukul who are right now in full preparation mode ahead of the Pran Prashishtha in Ayodhya. And we just heard some beautiful bhajans. आप लोग काफ़ी कुछ तैयारी में हैं. एक भजन जो है अभी आपने सुनाया था, यहाँ पर आप लोग परफॉर्म करे थे. ज़रा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा इस भक्तिमय माहौल में शामिल करें. जी, फिर से जो है उसी गाने को दोहराते हुए हम लोग फिर से उसी भजन में लिपटेंगे. तो फिर से गाना जो है शुरुआत हो रहा है. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. देख लो मेरे दिल के नगीने में. देख लो मेरे दिल के नगीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए. मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए. राम के नाम का मुझको रस चाहिए. राम के नाम का मुझको रस चाहिए. सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में. सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में. जय श्री राम. जय श्री राम. So it's a powerful chanting that is going on ever since we have landed. In fact, more from the moment of boarding the flight to Ayodhya, you know, everybody is waiting for this moment. And we just heard this electric atmosphere is of course being built by not just the old, not just the young, but we are seeing that continuously. We are seeing people are so excited. They are learning about Ram. They're spreading the teachings of Lord Ram, of Ramayan. And everybody has a story to tell when it comes to how they connect with Lord Ram. And of course, the politics also continues, viewers. We are getting you every angle ahead of the Ram Temple consecration with at its biggest moment in India's civilizational history. Let's take a look at some more reports. I'm told that there are more reports that are filed by our network of reporters. And in fact, we'll get you more reports. But right now, I'm reporting from Ram Ki Paidi. Right now, it's a very important site as far as Ayodhya is concerned. Sir, हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए हज़ारों लोग जो हैं और पूरे देश से आ रहे हैं. आप क्या कह रहे हैं, किस तरह का ये माहौल रहने वाला है 22 जनवरी को? बढ़िया माहौल है. आज की दिन बहुत शुभ दिन है जा रहा है. तैयारियों में बहुत शांति से बढ़िया से एकदम राम जन्मभूमि उद्घाटन हो रहे हैं. हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हो रही है सब पर, लेकिन राजनीतिक तो झूठ फूस हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, नहीं सही नहीं हो रहे. आप क्या कहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या की नगरी पूरी जो है इसको किस तरह से डेकोरेट किया गया, बिल्कुल कायाकल्प कर दिया, काया पलट कर दिया पूरी तरह से. अयोध्या को आप किस तरह से आज की तारीख में देखते हैं?
अयोध्या जब भगवान श्री राम जी जहाँ विराजमान थे उस समय की जो अयोध्या रही होगी वही अयोध्या आज हम यहाँ आज देख रहे हैं। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी जब विराज जाएंगे तो पूरी तरह से राम राज्य हो जाएगा। तो योगी जी भी कह रहे थे कि त्रेता युग की याद दिला देगा, त्रेता युग की याद दिला देगा। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि ये तो कलयुग हो जाएगा दलितों के लिए। वो थोड़ा सा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कि हमको भी लोग किसी न किसी बहाने जानते रहें, याद रखें, बस भूल ना जाए। आप कहते हैं कि राम जो है वो सबके हैं और सब लोग राम में। जी, सबके राम हैं। जी जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी से ही दिवाली वाला माहौल है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर माहौल है, बहुत सुंदर कथाएं चल रही हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है। मतलब इतना सुंदर कि हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, इतना अच्छा हो रहा है। सर आप महाकवि त्रिफला जी हैं, जन्म से ब्लाइंड हैं। इन्होंने 250 किताब लिखा है और हम टनाटन मिश्रा हैं। अभी आपने कहा दीपावली चल रहा और सही वास्तव में उस दिन 22 तारीख को दीपावली ही रहेगी कि प्रथम दीप दान करो सरयू के किनारे, मित्र दूजा उजियारा करो शंकर के द्वार में। ये नागेश्वर नाथ मंदिर है कि प्रथम दीप दान करो सरयू के किनारे, मित्र दूजा उजियारा करो शंकर के द्वार में। और तीजा दीप राम जन्मभूमि पे जलाओ आए, चौथा दीप जल जाए गढ़ी के बयार में। दीप से अनेक छेक टेक जो लगाओ आए, बनिगा विवेक अभिषेक के सुधार में। और काली माँ हटाओ देव काली को मनाओ आए, राम कुल देवी दरबार के महार में, राम कुल देवी दरबार के महार में। जय श्री राम। आप पूछे जो भी पूछना हो। जो पूछ रहा हूँ। 500 साल का इंतजार है, ये 500 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदरतम में सुंदरतम है। क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त हो चुकी है, कार्रवाई है। कार्रवाई में कोई लापरवाही नहीं है। हम अपने अंतरंग के संग बड़े जो जंग शुरू किए वो कटी पतंग से ऊपर उठ करके आ गई है। बड़े उमंग के साथ कुछ लोग सरहंग आए पर बेदरंग हो गए। यहाँ पर मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष पक्ष पर जो लक्ष्य रख रहा हूँ कि मंदिर के निर्माण की मोदी के मनसोच जन्मभूमि पर बन गया। ना ही लगी खरोच, ना ही लगी खरोच। एकड़ 66 ले भूमि, राष्ट्रीय सेवक संघ राम मूर्त ले झूमी। अक्का त्रिफला कब सुना हुआ हो मोदी बलशाली, और जन्मभूमि पर बना बजाओ सब मिल ताली। मैडम, मैंने भी राम जी के ऊपर एक कविता लिखी है, आप लोगों के बीच में सुना रहे हैं। बाबूजी सुनिएगा। राजा राम अपने घर आ रहे हैं, घर घर द्वारे द्वारे नगर नगर, देश में राजा राम आ रहे हैं। आओ करे तैयारी, राजा राम आ रहे हैं। घरों को सजाना है, द्वारों को रोशन करना है, राजा राम अपने घर आ रहे हैं। नगरों में यात्रा निकालनी है, देश का मान बढ़ाना है, राजा राम अपने घर आ रहे हैं। राजा राम का दुनिया से परिचय कराने का समय आ गया है, राजा राम अपने घर आ रहे हैं। राम जीने की पद्धति हैं, मर्यादा के उदाहरण हैं, उनसे सीखने का समय आ गया है, राजा राम अपने घर आ रहे हैं, राजा राम अपने घर आ रहे हैं। जय श्री राम। मैं कानपुर से हूँ, सुनील मंगल। So of course, as you can see, people have come to Ayodhya in the build-up to that mega inauguration that is going to happen. In fact, viewers, as the gentleman right behind me just mentioned in his poem that Lord Ram is going to arrive. He is going to arrive, and Lord Ram's idol is going to enter the Garbhagriha today. So there are a lot of rituals that are happening in the run-up to the Pran Prashishtha. Now, why Pran Prashishtha